Okay. Hope everyone is doing well. Hopefully everyone is able to hear me and see me as well. So let's get this party started. Okay. Um, I don't know whose deal was this. I'm not sure. I think it was Heather's, but yeah. So this agent I talked to, she said she's busy. She will call me back. So I'm gonna call her. I don't know whose deal was that, guys. So whoever the deal is, just remind me to call her again. Okay, I'll call her again in about in an hour. In an hour. Um, Heather is this is yeah, it's Heather's deal. Okay, never mind. So I remember Heather's deal. I'll call him back. Hussein says, "Assalamu alaikum, walaikum assalam, Hussein. How are you? Welcome back. Welcome back. How's everyone doing on TikTok as well? Welcome, welcome. Okay, so we'll go to the calculator. I want to show you guys the calculator just so आप लोगों को पता हो कि we are what are we working on with that. Okay, I'm gonna give you a rundown of what we talked about last time. कल हमने क्या बात करी थी? I'm gonna give you a rundown. For you to buy a property, there is many ways. Okay, it is structured in usually three big ways. Okay, one is the cash offer. Okay, the second is conventional, and then third is creative. Okay, as an investor likes the third offer the most, the creative. Okay, now creative जो है, it's an umbrella term. You know, umbrella, you can come, a lot of people can come under umbrella. So creative is an umbrella term. Okay, when you are in umbrella, there is many more creative options that you can use to buy the property. One is seller finance, which you guys know already. Okay, everyone know this, we talked about it a lot. And second is sub 2 or mortgage takeover or trust acquisition. इन तीनों को एक ही चीज बोलते हैं, sub 2. Okay, subject to the existing loan. Okay, तो हमने कल बात करी थी दो चीज़ों की, सब्जेक्ट टू की बात करी थी और हाइब्रिड डील की बात करी थी. अच्छा, तो जब सेलर फाइनेंस की आप ऑफर देते हैं क्लाइंट को, बोलते हैं कि मैं घर आपका सेलर फाइनेंस से बाय करूँगा. अमारा से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम अमारा, वी डूइंग वेल. जब आप सेलर को बोलते हैं ये लो सेलर फाइनेंस की ऑफ़र और वो रिजेक्ट करता है, तो आपको मैं हमेशा बताता हूँ, आपसे पूछें क्यों भाई. रिजेक्ट करने का कोई ना कोई रीज़न होता है. तो वो आपसे पूछेगा कि आप पूछो उससे क्यों, और वो बोलता है कि फॉर एग्जांपल जो कि सबसे बड़ा रीज़न है लोन का. I'm very confused how to email on Zillow.com. It's very easy. Copy the name of the agent and his company and paste it into the Google. Okay, so the biggest reason someone will say no to seller finance is because they have a loan on the property. Okay, they have a loan on the property, so they cannot finance you because they have to pay the bank. Okay, whenever you hear that I have a mortgage on this property, it should ring a bell with two things, with two potential outcomes. One is seller, sub 2 accusation, trust accusation या mortgage takeover. First ये आपके जहन में आना चाहिए. दूसरा आना चाहिए hybrid deal. Hybrid deal is a combination of giving money to Mr. Seller and taking over the mortgage. Okay, तो अगर seller finance और बैंक को हम मिला दें और उनका कोई बेबी हो तो उसको हाइब्रिड बोलेंगे. ओके, तो मतलब है कि हम बैंक को भी पैसे देंगे और सेलर को भी पैसे देंगे उसकी इक्विटी का. ओके, तो कल हमने बात करी थी कि बहुत ज़्यादा सेलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा मॉर्गेज होता है और वो डूब रहे होते हैं पानी में. ओके, डूब रहे इस वजह से है, उनका हाउस है 100,000 का, उन्होंने लिस्ट किया है, वो बैंक को ओ करते हैं 95,000. ओके, बैंक को ओ करते हैं 95,000, तो उनकी इक्विटी घर में सिर्फ 5,000 की है. ठीक है, और उसका मतलब है कि सिर्फ एजेंट का कमीशन ही आपका 5,000 से ज़्यादा के जितना होगा. उसके बाद उसको कमीशन के बाद क्लोजिंग कॉस्ट पे करनी है, फिर अपना खर्चा निकालना है. सो ही इज़ गोना ब्रिंग मनी फ्रॉम द पॉकेट एट क्लोजिंग. राइट, जब ट्रांजेक्शन क्लोज होगा तो वो अपनी जेब से पैसे निकाल के लेके आएगा और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा. तो ये वो बंदा जो ऐसे इस स्टेज पे है,
ही इज़ ड्राउनिंग, ओके, वो ड्राउन कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि करना है क्या, ठीक है। तो उसको बचाने का तरीका होता है कि हम बोलते हैं हम आपका घर बाय करेंगे $0 पे, ठीक है। क्यों $0 पे? क्योंकि वो तो इतना डूबा हुआ है कि उसको 50,000, 30, 10,000, 15,000 अपनी जेब से निकाल के सिर्फ प्रॉपर्टी सेल करनी है। हम आके बोलते हैं आप कुछ भी नहीं निकालो, हम आपको सेव करते हैं और हम आपको $0 देंगे इस घर के, मगर सारे काम हम आपके करके देंगे। जो सारे काम में दो चीज़ें होती हैं, एक एजेंट का कमीशन होता है, जाहिर है क्योंकि एजेंट को भी पैसे बनाना है, और दूसरा क्लोजिंग कॉस्ट होती है। क्लोजिंग कॉस्ट तो हम पे ही करते हैं यूजुअली इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर, तो क्लोजिंग कॉस्ट हम पे ही कर रहे हैं। अब आती है एजेंट का कमीशन। तो हम मिस्टर सेलर के पास जाते हैं, मिस्टर सेलर मैं आपको $0 दूंगा इस घर के, मगर मैं एजेंट के कमीशन को कवर कर लूँगा ताकि आपको अपनी जेब से पैसे ना निकालना पड़े। तो अब एजेंट का कमीशन बनता है 3,000, आपने बात कर ली, एजेंट से नेगोशिएट किया और उसको बोला मैं आपको 3,000 दूंगा। तो अगर एजेंट का कमीशन 3,000 बनता है तो टेक्निकली स्पीकिंग 3,000 वो एजेंट कमीशन हो गया और 2,000 आपने क्लोजिंग कॉस्ट पे कर दी, ठीक है। तो 5,000 में आपने इतना बड़ा घर खरीद लिया, ओके। अभी और भी मेथड है जिसमें हम $0 पे भी खरीद सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट $0 यहाँ पे हमने 5,000 का खरीद लिया, हम इसको और भी कम कर सकते थे, हो सकता है 4,000 में भी हमें घर मिल जाए, बट फॉर एग्जांपल फॉर नाउ हमने 5,000 का खरीद लिया और मिस्टर सेलर खुश होकर चला गया, उसकी जॉब ख़त्म। मिस्टर बायर बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि 5,000 में इसको घर मिल गया, $5,000 में, राइट। $5,000 तो एक महीने की इनकम होती है एक डिसेंट हाउस होल्ड की, ठीक है, और उसमें पूरा घर मिल जाना इट्स अनहर्ड ऑफ, ठीक है, ये कभी सुनी हुई बात नहीं होती। और अगर आप किसी को बताओ कि मुझे 5,000 में मिला है, वो आपको बोलेगा झूठ बोल रहा है, ओके। तो क्रिएटिव जो मैंने आपको तीसरा बताया था, कैश, कन्वेंशनल, क्रिएटिव ऑफर में ये इसका मतलब है अनोखी ऑफर, अजीब ऑफर, या फिर ऐसी ऑफर जो आप देखते नहीं है रोज़मर्रा में, ठीक है। तो ये हो गई क्रिएटिव ऑफर, और इसी क्रिएटिव ऑफर से आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ ख़रीद के प्रॉपर्टी ख़रीदते और उसको आगे बेच देते हैं 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में हम, और वो भी 1,000 2,000 की एक्स्ट्रा फीस के साथ हम उस प्रॉपर्टी को रखते नहीं हैं। मगर अगर फ्यूचर में जब हम रखना शुरू करेंगे तो देन हमको रियलाइज़ होगा कि हम कितना सारे पैसे मिस कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम एक प्रॉपर्टी को आगे भेज रहे हैं, ओके। एनीवेज वो हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा जब हम खुद इन्वेस्टर बनेंगे, तो हम जो है इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो एक सेल्फ फाइनेंस का सबसे बड़ा नेगेटिव क्वेश्चन आता है कि मैं नहीं कर सकता, वो इस वजह से मेरे पास लोन है। अब आपको पता चले कि आपने लोन चेक किया, अगर लोन विद इन 10 to 15,000 होता है, टेक्निकली नॉट 10 to 15,000, टेक्निकली बोलते हैं कि अगर आपका लोन अमाउंट, ठीक है, आपका जो लोन अमाउंट घर पे रहता है वो और परचेज प्राइस के दरमियान 1 to 2% का डिफरेंट है, या 3 to 4, मतलब आपकी इक्विटी सिर्फ प्रॉपर्टी में 3 to 4% है, तो वो बंदा डूब रहा है, ठीक है, ही इज़ ड्राउनिंग वेरी मच इन द वाटर, ओके। अगर उसकी इक्विटी 30% है, 40% है, तो फिर हम उसको ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी ना दें मिस्टर सेलर को बोलें कि आप घर जाओ, नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी 40 से 50,000 घर में लगा दिए हुए हैं, अब उसको सिर्फ 50,000 रहते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ मॉर्गेज टेक ओवर करा और उसको बोला घर जाओ। फिर तो आपने 50,000 का जो उसने पैसे डाले उसको देखा ही नहीं, और उसको बहुत गुस्सा आएगा कि भाई मेरे 50,000 मैं ऐसे कैसे इसको मना कर दूँ, ठीक है। तो अब फिर डिस्कशन आती है कि 50,000 उसके वापस भी करने हैं, ठीक है, और बैंक का लोन भी पे करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड स्टेज पे जाते हैं जो कि हाइब्रिड डील होती है। और हाइब्रिड डील में हम बोलते हैं देखो मिस्टर सेलर, आपने 50,000 घर में डाले हुए और 50,000 आप ओ करते हैं बैंक को, ठीक है। तो हम आपसे ये घर लेते हैं, हम 50,000 आपको पे करते हैं, और बैंक की जो 50,000 है वो हम बैंक को पे करेंगे, ठीक है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप 50,000 उसको कैश, दोनों को कैश में देना, नहीं। बैंक का तो एक पेमेंट प्लान चल रहा है जो मिस्टर सेलर ऑलरेडी पे कर रहा होगा, आई डोंट नो $500 पर मंथ का। तो आप बोलते हैं ठीक है मैं आपके शूज़ में आ जाऊँगा और इस बैंक लोन को जो आप पे कर रहे हैं मैं $500 आपके आपके बिहाफ पे पे करने लग जाऊँगा,
ठीक है, तो बैंक हो गया साइड में, कंफर्म हो गई। फिर मिस्टर सेलर को 50,000 उसकी भी पेमेंट करनी है। तो मिस्टर सेलर से हम बात करते हैं, देखो मिस्टर सेलर हमारा रेंट इतना है, ये मसला है, तो मैं सारे काम करने के बाद आपको 300 पे कर सकता हूँ फ़िलहाल के लिए, अनटिल द बलून। ठीक है, मैं 300 पे करूँगा 7 ईयर्स के लिए, 84 मंथ्स के लिए। ठीक है, जब वो बलून पॉप होगा, जब 8 ईयर्स कंप्लीट होंगे, तो मैं आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, और बैंक को जितने पैसे रहते होंगे बैंक को मैं वापस करके रीफाइनेंस कर लूँगा। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आप 8 साल में अलग हो जाएंगे और मैं अलग हो जाऊँगा, मेरा फिर बैंक का कनेक्शन रहेगा और मैं फिर बैंक को पे करने लग जाऊँगा, सिर्फ बैंक को, आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हाइब्रिड डील में हम दो बंदों का सोचते हैं, एक तो बैंक का सोचते हैं क्योंकि बैंक ऑलरेडी मिस्टर सेलर पे करते हुए आ रहे हैं, और हमको क्योंकि मिस्टर सेलर की एक्विटी बहुत ज़्यादा है, 40-50 हज़ार है या फिर 40-50% है प्रॉपर्टी में ऑलरेडी, तो फिर हम हाइब्रिड डील का सोचते हैं। तो वहाँ पे हाइब्रिड डील लगेगी क्योंकि यहाँ पे बैंक को भी पे करना है, सेलर को भी पे करना है। ठीक है, अगर उनकी एक्विटी बहुत कम है, 2%, 3%, 5%, इवन 10%, इट्स नॉट इनफ मनी कि सेलर ने पैसे बनाने, सेलर पैसे नहीं बना पाएंगे, तो 10-20 हज़ार तो उसको एजेंट को देने में लग जाएंगे, क्लोजिंग कॉस्ट देने में लग जाएंगे। तो हम आते हैं बोलते हैं कि नहीं, हम आपको कुछ नहीं देंगे, आपसे $0 पे घर लेंगे, मगर डूबते हुए बचाएंगे वो इस तरह कि आपकी क्लोजिंग कॉस्ट और आपकी एजेंट कमीशन हम पे कर देंगे, ताकि आपको कोई भी चीज़ पे ना करना पड़े और आप एट ज़ीरो पे खड़े हो। राइट, अभी जिस तरह मिस्टर सेलर खड़ा हुआ है वो नेगेटिव में, राइट, अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, आफ्टर ऑल द कॉस्ट वो नीचे जाएगा और वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब उसने जेब से पैसे निकालने और प्रॉपर्टी पे एट क्लोजिंग पे लगाने। तो हमने उसकी जेब से पैसे निकालने बचा लिए और उसको समझा दिया कि भाई क्योंकि आपकी जेब के पैसे निकल रहे हैं तो वो पैसे हम कवर करते हैं, मगर आपको कुछ नहीं देंगे क्योंकि आपने कुछ बैंक में सॉरी घर में एक्विटी बनाई नहीं है। ओके, एंड दैट्स इट। एंड फिर हम उसको बोलते फिर कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे, उसको टोकन मनी भेजेंगे, या इन्वेस्टर एजेंट को पे करेंगे, वो पे करने के बाद घर हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जाएंगे मार्केट पे, इस घर को हम सेल करेंगे। अब जैसे हमने $0 वाला घर है जिसको आपने एजेंट कमीशन दे के क्लोजिंग कॉस्ट दे के टेक्निकली आपने 5,000 का ख़रीदा। ठीक है, अब हम मार्केट में जाएंगे और इसी घर को जो हमें 5,000 का मिला है उसको 6,000 की वैल्यू लगा के बोलेंगे कि भाई जिसको लेना है वो ले लो, क्योंकि ये डील बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आपको पता है कि जब भी आप बैंक के पास जाते हो वो आपको कम से कम 20% मांगेगा। तो अगर 100,000 का घर है तो 20% 100,000 का होगा 20,000। ठीक है, तो 20,000 आपको जेब से निकाल के देने हैं बैंक को, लाजमी बैंक को ये घर देने के लिए। आप ऐसी डील लेके आए हो जिसमें आप 5,000 में, राइट, जो कि मेरे ख्याल से 5% से भी लेस्ट है, आप 5,000 में, जो कि सिर्फ एग्जैक्टली 5% है, 5,000 में आप घर लेके दे दो किसी को। ओके, तो लोग भागे भागे आते हैं, सिर्फ इन्वेस्टर नहीं आते, नॉर्मल लोग भी आते हैं जो जिनको घर में रहने का होता है शौक, मतलब शौक से मुराद वो सेटल डाउन हो रहे हैं, तो वो लोग आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसके बाद ये देखा जाता है कि भाई घर रेंट कितना बना रहा है, घर का मॉर्गेज कितना है, मिसेस सेलर को कितना पे करना है, सबको कंबाइन करके कॉस्ट आती है $1,000, सबको कंबाइन करके, और रेंट हमें मिल रहा है $2,000। तो ये घर बहुत अच्छा घर है इन्वेस्टर के लिए भी। उसको पता है कि मैं 5,000 तो ठीक है मैं ले रहा हूँ, 5,000 के बाद जो लोन वगैरह की अमाउंट मिलू के मैं ज़ाहिर मैं अपनी जेब से पैसे तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं तो रह नहीं रहा वहाँ पे। तो मुझे रेंटर चाहिए है जो रेंटर इस मॉर्गेज को कवर करेगा। ठीक है, तो फिर वो 1,000 का खर्चा आता है और 2,000 का रेंट मिलता है, जो कि आप चेक करके निकालते हैं कि रेंट कितना है सिटी में। ऐसा है तो मिस्टर सेलर नो, मिस्टर बायर नो, मिस्टर इन्वेस्टर नो दैट उसके पास $1,000 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो उसको पता है उन $1,000 में से वो कैपेक्स निकाल लेगा, मैनेजमेंट कॉस्ट निकाल लेगा, वैकेंसी कॉस्ट निकाल लेगा। वो सब निकालने के बाद जो उसके पास पैसे बचेंगे, राइट, उन पैसों को वो एज अ प्रॉफिट करेगा। तो इन्वेस्टर के लिए तो ये एक अच्छी डील हो जाएगी। मगर ऐसा होता है कि $1,000 की कॉस्ट है और रेंट $1,000 का बन रहा है, तो इन्वेस्टर इसमें कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि $1,000 के बाद उसको अभी मैनेजमेंट कॉस्ट, कैपेक्स फीस, वो सब लगाना है, उस उन सब चीज़ें लगाने के बाद उसके पास
कुछ भी नहीं बचेगा और उल्टा वो पैसे लूज़ करेगा। तो इन्वेस्टर तो इस डील से बाहर चले जाएगा अगर रेंट और ओनिंग की कॉस्ट विच इज़ लोन्स वगैरह को मिला के बहुत ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर भाग जाता है। ठीक है, फिर एक पूल रहता है लोगों का, वो लोगों का पूल जो सबसे बड़ा पूल होता है। जैसे मैं, शादी हो गई, मैं सेटल डाउन कर रहा हूँ, या मुझे जॉब मिल गई किसी सिटी में, वहाँ पे मूव करके सेटल डाउन कर रहा हूँ अपनी वाइफ एंड किड्स के साथ, या आई डोंट नो, मुझे ये घर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना है ताकि उनको कुछ पे ना करना है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह की घर बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी डील है। उनको बैंक के पास नहीं जाना, अप्रूव नहीं लेना, सिर्फ 5,000 में दे गेट एवरीथिंग। सिर्फ 5,000 में पूरा घर उनको मिल जाएगा यूएस में, जो कि $1,00,000 का है। इट्स अ गुड डील। तो वो लोग फिर ये घर ले लेते हैं हमसे और लेके फिर अपने पास रखते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स को मैं दे रहा हूँ, या फिर पेरेंट्स में रहेंगे, फलाना ढमकाना। या वेकेशन होम है, अगर वो अच्छी जगह पर है पानी के साथ पे, तो वो वेकेशन होम उसको बना के उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हम उससे $1,000 एक्स्ट्रा चार्ज करके ये डील को ख़त्म करके नेक्स्ट डील पे चले जाते हैं। ओके, होपफुली दैट मेक्स सेंस। आई विल टेक क्वेश्चंस राइट नाउ। 5,000 जी, $5,000 की कॉस्ट पे कि हम क्रिएटिव डील स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, तो हमने 100,000 का घर 5,000 में ख़रीद लिया और आगे जाके हमने 6,000 में बेच दिया। तो हमने 1,000 का प्रॉफिट कर लिया, या 7,000 में बेच दिया अगर ज़्यादा खर्चे थे तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जो नया बंदा है वो सिर्फ 6,000 में घर खरीद रहा है। I have a question. Seller finance offer must be 7 to 8 years or it could be less. Um, the problem, देखो, सेलर फाइनेंस की प्रॉब्लम ये होती है कि हमें 8 साल के बाद बैंक के पास जाना होता है और बैंक को बोलना है मुझे इस घर में से सारे पैसे निकाल के मुझे दे दो और मुझे उन पैसों का लोन इस घर पे वापस डाल दो। ठीक है, जितना मैंने पे किया, फॉर एग्जांपल 100,000 का घर है और मैंने पे किया है 25,000, तो बैंक बोलता है ठीक है, मैं आपको 75% का लोन दूंगा, विच इज़ $75,000। बैंक आपके घर में से $75,000 निकालेगा और आपको दे देगा, और आपके 25,000 का और आपकी जो 25,000 का घर है, आपके जो 25,000 जो आपके अंदर थे वो घर में रहेंगे। ठीक है, तो जो घर आप ओन करते हैं 75,000 वो वापस देता है, और वो 75,000 देते हैं सेलर को जिससे आपका लोन चल रहा था, सेलर फाइनेंस वाला। तो वो कंप्लीट हो जाता है और फिर उसको पैसे देते हैं और फिर आपका और बैंक का लोन चलता है, और जो पैसे बचते हैं उन पैसों से आप और घर खरीद लेते हैं। राइट, तो घर $0 पे ख़रीदने का यही मकसद होता है। जिस तरह बैंक आपको पैसे देता है रीफाइनेंस पे, आपने में से सेलर को दिए, जितने उसके बचे थे 8 साल में वो वापस हो गए और आपके पास पैसे बचे, आपने उन पैसों से उसी तरह सेलर फाइनेंस का एक और घर खरीद लिया और फिर आप बैंक के साथ रिलेशनशिप में चले गए, फिर आपको प्रॉफिट आने लगा। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल हम 6 साल की बात करते हैं, 6 साल में मसला ये होता है कि आपके पास 25% एक्विटी घर में होनी लाजमी है। अगर 25% एक्विटी घर में नहीं है तो बैंक आपको 75% वाला लोन नहीं देता। वो बोलेगा नहीं, आपके पास इनफ एक्विटी नहीं है, मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो आपको नहीं देता और आप रीफाइनेंस नहीं करा पाओगे। जब रीफाइनेंस नहीं करा पाओगे तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे और सेलर भी फंस जाएगा, क्योंकि 6 साल हो गए, आपको उसको वापस करने पैसे, बैंक ने हाथ खड़े कर लिए, बैंक बोलता है मैं रिफाइनेंस नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास इक्विटी सिर्फ 20% है, मुझे और 5% इक्विटी चाहिए। तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक भी करना है मिस्टर को पैसे देने के लिए, और बैंक से रिफाइनेंस भी करना है, जो कि बैंक ने मना कर दिया। बैंक ने मना कर दिया देन नो क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, और फिर वो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। फिर आपको मिसेस सेलर के पास दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई मुझे 2 साल और दे दो, मैं नहीं कर पा रहा, 2 साल तक पैसे हो जाएंगे, या पैसे इतने मैं इतने पे कर दूंगा कि सेलर फाइनेंस हो पाए। राइट, तो इस वजह से 7 to 8 years इज मिनिमम वी नीड। 7 years मिनिमम, द मोर द बेटर। अगर 10 साल हम ले आते हैं इट्स इवन बेटर। और ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते, बहुत सारी डील ऐसी भी हुई हैं जो 10 साल की हुई हैं, वो इस वजह से कि सेलर को सारा कैश अभी नहीं चाहिए। सेलर बोलता है कि मुझे कैश मेरी रिटायरमेंट पे दो। ठीक है, उससे होता ये कि जब सेल जो उसको पैसे मिले ही नहीं है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती उसके सारे पैसे बचे हुए। ठीक है, और वो जॉब भी कर रहा है तो उसके पैसे वहाँ से भी आ रहे हैं। अगर उसने पैसे भी जॉब हाउस के रख लिए अपने बैंक अकाउंट में और जॉब के भी पैसे आ रहे हैं, तो बैंक तो उस पर
गवर्नमेंट उस पर 50% टैक्स लगा देगी क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे, राइट। तो वो क्या करते हैं, उसको घर में रखते हैं, मेरे पैसे तो हैं मगर वो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, तो अब उस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो रिटायरमेंट में ये होता है कि अब रिटायरमेंट में आपने जॉब छोड़ दी, तो अब आपकी जॉब हट गई, अब जो पैसे हैं सिर्फ उस पर टैक्स लग रहा है, तो टैक्स बहुत कम लगता। तो इस वजह से बहुत सारे सेलर ये चाहते हैं, चलो मैं घर दे देता हूँ, मुझे घर सेल हो गया, मेरी टेंशन छूट गई, मुझे कोई रेंटर का मसला नहीं है, मुझे कुछ प्लम्बर का मसला नहीं है, मुझे कुछ मैनेजमेंट कॉस्ट का मसला नहीं है, कोई और बंदा देख रहा है, मुझे बस 10 साल के एंड में जब मैं रिटायर हो रहा हूँ ये बंदा मुझे सारे पैसे पे कर देगा, तब मेरी जॉब भी नहीं होगी, तो मुझे गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लगाएगी, तो मेरे पैसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द होल डिस्कशन ऑन दिस। सर मेरी एजेंट को भी कॉल करनी है। यस, ये आपके ख्याल से आपका ही एजेंट है जिससे मेरी बात हुई थी अभी। 1 सेकेंड, अभी 2 मिनट। ये वाला और ये वाला, आई थिंक ये दोनों आपके ही हैं, राइट। तो इसको वी विल कॉल। Fahim said yes. Said by yeah, said by Gracia is saying she spoke to the seller. She wants the actual contract versus LOI. Okay. Um. Like, but basically इसमें होता ये कि हमको हमको उससे पूछना है कि that's okay. I appreciate your everything. I can send you offer today. I just want to know if the seller verbally agreed on the offer. Okay. um, Reason being, if we need to write a contract, we don't have an agent, okay. We have to hire an attorney, the real estate attorney, to write the contract, and then we can do all that and we'll pay all the costs, but we just need a confirmation from the seller. Okay, तो आप ग्रेसिया से सिर्फ इतना बोल दो, hey Gracia, I talked to my financial team. My financial team said that they are starting working on the document, starting working on the contract. They just wanna confirm that the seller has verbally agreed on the offer. Okay, everyone just keep this in mind. अगर आपको कोई भी एजेंट बोलता है कि नहीं भाई मुझे आके बात करो, ये करो वो करो, तो आप सब बोलना ठीक है बिल्कुल बात कर लेते हैं या बिल्कुल आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं, बट आई वांट टू नो कि इफ सेलर हैज़ वर्बली एग्रीड, ठीक है, ज़बान से एग्री किया है या नहीं, क्योंकि ज़बान से एग्री की हुई चीज़ जो होती है इट्स नॉट अ रियल थिंग, इट्स नॉट अ रियल थिंग। इसकी लीगल इश्यूज में मतलब गवर्नमेंट में, कोर्ट में कोई स्टैंडिंग नहीं होती। ओके, दैट्स वाई हम पूछते हैं भाई वर्बली बता दो, उसने ओके कर दिया तो ठीक है मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर देता हूँ, नो इश्यूज़। बट अगर उसने वर्बली एग्री नहीं किया है और हम कॉन्ट्रैक्ट लिख के पैसे पे करके उसको कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं, वो बोलती है सेलर हैज़ रिजेक्टेड, वी लॉस्ट द मनी, ओके, एंड द टाइम। ओके, मोस्ट लाइकली ग्रेसिया ने वैसे ही बोला है। वो चाह रही है कि आप पहले पूरा लिख के आओ, फिर मैं सेलर को दूंगी ताकि जो है सेलर को मैं दिखा सकूं कि भाई एक ऑफ़र आई है। क्योंकि ज़्यादातर एजेंट यही करते हैं, एजेंट क्या करते हैं दिखाने के लिए कि भाई कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं ऑफ़र पे ऑफ़र लिख के आ रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि नहीं लिख के दो ताकि कंफर्म ऑफ़र में मैं सेलर को दिखा पाऊँ और उससे बात कर पाऊँ। Agent details inbox. Yes, Jeffrey and Sarah. Sure, but I have other things to ask. Yes, we'll get to that. Can you call her? Yes, we can call everyone. No worries, guys. Okay. Hopefully that makes sense. Um, yeah. So I'll start with the calling agents here. इस property start करते हैं. Jeffrey को I don't remember Heather. What was the issue with Jeffrey? Jeffrey से क्या बात करनी है? They're both different properties. We asked Jeffrey to give us the remaining balance. Okay. Did he not give you? Yes, he did not. Did you email him? Ask him on the email? Pending from ownership. Okay. We just have to, if it's waiting for ownership, then it's okay. We just have to wait a little bit. But it's not
Okay, the thing is, Heather, if I call him, he's gonna get upset because I'm keep calling him or you keep calling. Email is the best way to email is the best way to follow up. आप उसको follow up पे रखो जब तक वो मिलता नहीं है. अगर वो बिल्कुल ही reply नहीं कर रहा है and he's completely done, then email this guy Bradley, और इस Bradley को और इसको जेफरी को एक ही email में डाल के आप बात कर लो, क्योंकि मैं इसको देखो, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, मैं इसको कॉल करता हूँ, वो क्या बोलेगा, ठीक है मैं जाके देखता हूँ. देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस कॉल. वो फिर वो वाली बात हो जाएगी ना, तो आप इसको फॉलो पे रखें. आज कल था मंडे, हो सकता है आज या कल में वो रिस्पॉन्ड दे दे. अगर नहीं देता तो ईमेल ब्रैडली, अगर वो भी नहीं देता तो वी शुड डेफिनेटली कॉल. इससे मेरी लंबी बात हुई भी है ना इस पे, तो आई डोंट थिंक कि हमको दोबारा कॉल करनी चाहिए इस वजह से कि वो ऑफर्स नहीं दे रहा. क्योंकि असल में मसला ये कि एक तो कन्विंस हमें ये भी करना है कि ये क्रिएटिव डील ले, राइट. और अगर आपको ऑफ अगर कन्विंस नहीं हो रहा तो आप प्रॉप पॉइंट में चेक करो कि इस प्रॉपर्टी पे कितना रेंट है, कितना लोन है. गाइस मेक श्योर कि आप जो भी एजेंट से बात कर रहे हैं ना, एजेंट को आपको दोस्त बनाना होता है. ऐसा नहीं कि आप उसको तंग कर दें या बहुत इशू. ओ इट्स नो मॉर्गेज. It says no mortgage. How is that possible? It's a big property. Let's see. Yes, इस पे no property बोल रहा है. तो हैदर देन what you should do, आप उसको क्या करें को ना, उसको स्क्रीनशॉट भेजो इसका, जो जो आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन दिख रही है, या तो उसको बस बोल दो कि भाई आई चेक्ड ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड, it tells me that there is no mortgage on the property. Can you confirm that with me or not? Can you confirm that with Mr. Seller? That's it. फिर इंस्टेड ऑफ नंबर निकालने के लिए वो सिर्फ आपसे ये पूछ के आ जाएगा कि इज इट डन और नो. Hopefully that makes sense. Okay. Yeah, it has no mortgage. It doesn't say anything when. Maybe it's 1913 built, so somebody owned it for a very long time. Okay. What's the deal with this property? इस पे हमने क्या बोलना है इनको? Daisy Avenue. Who's the Berkshire Hathaway? Sarah. Um, Sarah, she wants to call, discuss the offer. Okay. Sarah, the offer is in the inbox. Sarah, number of times she will call me today. She said call me today at 4. Note the above link indicates the calculator property below the agent commission box. Okay, I'm not sure what this means, but let's see. तो आपने ये जो नंबर रन करे हैं डेजी के, उसको आपने सेलर फाइनेंस दिए 10% अप, 10% डाउन. रेंट आपने 4004 रखा है. इट इज अ ड्यूप्लेक्स क्वाड्रूप्लेक्स. Good morning, families. Brunch is now being served in the dining hall. Enjoy. So it's a, okay, sorry, I lost my train of thought. Okay, it's quadruplex, which is good. It means कि 4 family रह सकती हैं. And 4,400 makes sense. Expense management, blah blah blah. 1,300 is left. Agent commission is 11,000. Agent commission हम पे कर रहे हैं. There was no brunch plan today, right? There was no brunch plan today, right? Yeah. So
Yeah, I think this looks good. I don't think any problem. 30 years amortization is very decent amortization. So monthly payment is good. Monthly payment we can even bring it down to 1,000. Be like, yeah, we'll start with 1,000 and see. If the 1,000 doesn't work, फिर हम उसको और पैसे दे सकते हैं. Um, the calculation doesn't include the agent commission, but we can pay that also. No, we don't want to pay agent commission. राइट एजेंट कमीशन तो हम उसको पे करने की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मिस्टर सेलर को करना है इस 46,000 से. ठीक है, 46,000 हम देंगे, उसमें 11,000 मिस्टर एजेंट को जाएंगे और जो है बाकी चीज़ें जो बचेंगी वो जाएंगी एजेंट को. ठीक है, बट I'll check the contacts here and see if there is a loan on this property. 0% equity. Apparently, they haven't even paid a single dollar, which I don't think that's a true. It's not true. It's not true. Why it's not true? I can tell because see when it was sold right here, 2019. So there's no way they haven't paid any money since 2019. It's just that it's not updated on the public record. Okay. Um, so that's fine. So there has to be some sort of loan on this property that we need to ask the agent. Okay, agent का नाम है Sarah. I gave monthly payments of 1150. Loan info I got it from PropWire is in the calculation. PropWire is saying no loan. How did you get it from PropWire? Yeah, so let's talk to Sarah and see what she's saying. And see if she is okay with the offer. आपने उसको ऑफर दी थी, उसने सिर्फ इतना बोला कि मुझे कॉल पे बात करो. That's it. She didn't say anything good or bad about the offer. Guys, who has the deal from Kerry? Kerry, I think it's Fahim deal. Good morning. The seller has declined your offer. She's open to another offer from you, but would like to be a little bit more structured and have more details on it. Can you currently own a property in Kansas City area? तो वो बोल रही कि एक जो आपने डील दी थी उसको सेलर फाइनेंस, उसने ये नहीं बोला कि कौन सी ऑफ़र डिक्लाइन करिए. फ़हीम, आपने शायद 2 ऑफ़र भेजी होगी, तो वो बोल रही है आपकी एक ऑफ़र डिक्लाइन कर दी बट वो दूसरी ऑफ़र में इंटरेस्टेड है. फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि आर यू करंटली ओन अ प्रॉपर्टी इन कैंसस एरिया सिटी. I'm not sure you क्यों क्वेश्चन पूछ रही है, but we can talk about that, okay? Fahim, so remember we have to call your agent and discuss that more. I don't know if Fahim is here. Yeah, I see him. Okay. Um, 419. Hi, this is Sarah. Hey Sarah, how you doing? I'm good. How are you? I'm doing well. So this is Syed. We have been speaking to Fahim over in property on Daisy Avenue. Yeah. Do you have a couple minutes to chat? Looks like you might be a little busy. I do have a couple minutes and do want to let you know that we've received multiple offers. I expect we might have signed something as soon as today. Oh, okay. So you guys are signing something today, so that means there is a potential accepted offer? Say that again? So you're saying there is a potential accepted offer for you guys already? Yeah, yeah. Okay, okay. I think we have sent a seller finance offer 10% over asking. Does that, of any interest to Mr. Seller at all? It's just hard
to compare that because we got a letter of intent, but without a legally binding offer to purchase, it's hard to throw that in against ones that are I at mean, that stage. absolutely. I mean, if you want us to put it in writing and get a proper contract going, I can get my attorney to write it. We can do it within, I don't know, probably 5 hours at the very least, and get it sent to you. I just wanted to know that if it's off interest, then we can kind of, put some money where our mouth is type thing and get the contract ready and send it to you. But if it's totally no interest, then it probably be waste of our time. So that's why we kind of send the Got it. Yeah. LOI to kind of get the sense and get the paperwork ready. That's not a problem. I can get it done maybe in 3 hours if you really want us to push it. Yeah, I don't want you to waste your time, honestly. I think if there's a scenario where we find ourselves on market through the end of the week, I could certainly, bring that back. But at this time, we have strong offers that would get it done the way I think you would prefer. So I don't Okay. want you to waste your time. Okay. Okay. If you don't mind, can you tell me what sort of Yeah. criteria they are looking for? That she's just interested in straight cash, conventional, or she's okay to see a better creative option if we were to bring it. Yeah, most of the offers that we had were either conventional or DSCR, so open to both of those. Okay. Really, just this investor was more or less liquidating his Cleveland portfolio. He's out of state now and just looking to pick up properties where he's at. So I see. getting it done sooner than later is also a priority. Okay. Because I think the seller financing was what, an 84-month term? Yeah. Yeah. Okay. And is that the probably the last property you guys are kind of selling, or have you sold his whole portfolio in Cleveland? That's a good question. We've been working on this one so long, no others have come up, so I believe it's the last one, but I Okay. can confirm. Do you have, so the person who sent me over the letter of intent, are they local? Do they tour these properties in person before committing, or how exactly do they like to see that progress? Yeah, very good question. So it's actually we will be the end buyer on this. Basically, how it Okay. does, we buy property overall. So it's like an acquisition firm. We have multiple investors. We kind of partner on the corporation. Basically, open a new corporation Mm-hmm. every property and deal it as is. And we don't step into the property. I don't think in 2 years, 3 years of owning the property in Cleveland, I probably came it once in Cleveland personally. But Oh, it just okay. we just send it. We have a very good contractor relationship in the city, very good management companies that we are working with. So all that Yeah. type of cost is taken care of. So we know we can just blindly send our contractor. He will go in and let us know the deal, and we just make the deal on that. So personally, I'm in Texas. I mean, I probably wouldn't be flying for this particular deal, but if it's really need to be, we can figure something out. Okay. Yeah. Sounds good. Well, I appreciate the call. If Yes. anything changes on this one, I can reach back out. Sounds good. And I'll try to work on the offer as well and make it a little bit more enticing for Mr. Setter to see maybe that's of any interest to him. Okay. I'll send you a new number Okay. shortly. Sounds good. Awesome. Thank you so much. We'll talk soon. Right. Thank you. Take Bye-bye. care, Sarah. Bye bye. So this property is very desirable. Okay. ये एक बहुत काम की प्रॉपर्टी इस वजह से है. It's a quadruplex. 4 families इस पे रह रही हैं और 4 family रेंट पे कर रही हैं. ठीक है. So that's why I was like, you know what, I'll pay the attorney fee, I'll buy this property off of you. But she's like, they have a cash and conventional offer. इस कैश ऑफर तो वो है जो जिसने पैसे देने. इसने एक वर्ड यूज किया था DSCR. ओके, उसको बोलते हैं डेट टू सर्विस इनकम रेशियो. ये जो लोन्स होते हैं ना DSCR, वो लोन इंसान पे बेस नहीं करते. जैसे मैं आपको बताया था कि भाई आपको जॉब चाहिए होती है 3 साल 4 साल की तो ही बैंक लोन देता है. ये जो होती है ना, ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज लोन होते हैं और गवर्नमेंट को फिक्र नहीं होती कि आप पैसे बनाते नहीं बनाते. वो उसको ये फिक्र होती है कि प्रॉपर्टी पैसे बनाती नहीं बनाती.
तो लोन कंपनी प्रॉपर्टी का रेंट खुद निकालती है, सब कुछ करके कैलकुलेट करती है। ये सब कुछ करने के बाद कितने पैसे बचेंगे, और ये जो नया बंदा बोल रहा है कि मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ, वो ओन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और वो बेसिकली बेस करता है प्रॉपर्टी की इनकम पे। और DSCR लोन क्वाड्रुपल एक्स जिसमें 4 फैमिली रहती है आराम से अप्रूव कर देगा, आई नो दिस। तो लोन मिलना आसान है, बट अगेन सेलर फाइनेंस की जो ऑफ़र होगी उसके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। भले DSCR की ऑफ़र 70% ऑफ आ रही है, मगर जो सेलर फाइनेंस की ऑफ़र आ रही है, इट्स गुड इन हिज वे। सो yeah, so Heather, basically what you have to do, you have done the 10%. So you're asking at 460. The numbers are making sense here. Um, how can we make it better? I mean, I don't know. We're already at 10%. Okay. Okay. What we can do, decrease 1 year, make it 6 year, and add 6 year with refinance contingency. Okay, एक साल कम करके उसको मंथ बताना, उसको बताना जो भी 7 years के मंथ हैं उससे कम करके हमने 6 साल के मंथ कर दिए हैं इस पे। ओके, और आई थिंक go 5% more on this, man. I think I don't want to let this property go. um, let's say if you go with 70,000. What's going on? The keyboard is not working. That's so weird. My keyboard is not working. How is that even possible? Oh, it's working now. Okay. Anyway, that's so weird. Um, let's go with 5% more. Oh, okay. Never mind. It's view only. Okay. Never mind. Never mind. Never mind. It's not for editing. Okay. Okay. That makes sense. Okay. So yeah, go with 15%, Heather, is on this property. Okay. Add 5% more on the asking price, and when you add 5% more, your down payment will also increase. That, and also mention that we will cover the closing cost. Okay, आपने 7 साल से 6 साल कर दिया, मगर 6 साल नहीं बोलना, आपने उसको मंथ्स बोलना है, ठीक है। और 5%, 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम, 5% और करके 15% एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, और उससे फिर डाउन पेमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि डाउन पेमेंट परचेज प्राइस पे होती है। ओके, सो डू दिस एंड दिस शुड बी गुड, आई थिंक। एंड देन स्टैंडर्ड ऑफर, मेरे ख्याल से जो ऑफर्स इनको आ रही हैं, आई डोंट थिंक इट्स गोना गो थ्रू, इट विल फॉल डाउन। तो फिर ये हमारे ऑफर पे आ जाएगा, एंड देन वी विल गिव हिम द सेल्फ फाइनेंस ऑफर। ओके, hopefully that makes sense, guys. um, okay, Fahim, I will take your questions now. Plus I need to talk to your agent already. Heather, I'll come back to you. Let me can you let me call Ahmed first, and then Fahim, I'll go back to you, and then I'll go to Heather, because Ahmed did mention it right after him. Okay, let me see what Ahmed have sent. Ahmed, who are we calling? Scott? Send me in the text, who are we calling? Garcia. Okay. I think this was the cell phone as well. तो आपने उसको क्या बोला कि मैं कॉल करूँगा, वो बोलती है ठीक है कॉल करो मुझे, करेक्ट, इसने ये बोला, मतलब ये रेडी है वो, पता नहीं मेरे फ़ोन को उस तरह इग्नोर कर रही है जैसे मैं उसका कोई रिश्ता फिक्स करा रहा हूँ।
Okay. Oh, there's no phone number. I forgot. Actually, I have saved. Carry Finance MLD. Hello. Hi, is this Grace? Yeah, this is. Hi. This is Syed. We have been communicating through email on the What's property. that? Yeah. Yeah, I yeah, mean, yeah, what's and I yeah. sent the email as well. But yeah, on the county road. Last time I heard that Mr. Seller was, I think, in the hospital or he was busy. You weren't able to reach out. Any No, update no, on? no, no. He's not in the hospital. He's good. Okay, sorry about that. He just wants an actual like offer. He doesn't want to sign an LOI. I work with different investors, and I know LOI is very common. He's just not. He this client specifically doesn't want that. Okay, so basically he wants us to put it in a contract, like a purchase sale contract, and send it to him. Is that kind of thing? Yeah, and it doesn't have to be a 1-to-4. But if you need it, if that's easier for you, we can do that, or I can just draft the contract myself. You'd be going in as an unrepresented buyer, correct? Right. We don't have a buyer. We usually have attorney. I mean, if you want us, I can get the contract done matter of one business days, but it does cost us, right? So that's why, as an Yeah, yeah, yeah. investment So firm. if that's going to cost you, I can go ahead and draft the contract. I Okay. will not be representing you. I would represent the seller only, but I can put the contract and then structure it that way. Yeah, and if you want, I can send you the previous contracts that we have had with the seller finance, and then Yeah, you can go go from ahead there. and send that to me. I'm at a conference, but Okay. follow up by email, okay? Okay, let's do Thank you that. so much. Let's do that. Thank you All so right. much. Okay, so I think we are good to go on this deal too. I don't think she's worried about anything. She just want to put it on a contract and send it to Mr. Seller. So what we will do, let me, I don't know if I can get someone to write the contract without paying money. Um, okay, let's do one thing. Ahmed, what you can do is that, um, as you know, we have to send a POF too, then that has to be secure email. So basically what I'll do, we'll write the contract. We'll not write it, but the previous Sarah Finance contract that we have had with other properties, we'll blur the name of the property and things like that and send it to her so that she can have a look at it and she can create her own contract quickly and send it to Mrs. Sarah. Mrs. Sarah can sign it and we can go from there. Okay. And then we will be under contract for that. Um, yeah, I think I just worry that this property, this house is not, this city is not big enough, but it's very close to Houston, so I don't think it should be an issue. Inshallah, we'll go through. Inshallah, we'll find someone. Anyways, so let's do that. So basically, what I will do, what we need to do, I need to send a contract. If you want, you can send that to me in your chat so that I remember as a note. I have to send her the contract, okay, of previous company. I have to send her the POF securely, and she's going to write the contract, okay. And Ahmed, just tell me the quick numbers that you have told him again, just so I don't misrepresent you, okay. So Ahmed, you're taken care of. Let's go to Fahim. Fahim, I'll check your deal and then I'll come back to other people has multiple deals. um Fahim, if you can open the mic, you're welcome to do so. I'll check your chat in the meantime. I have a question. Seraphin's offer. Can we do? Yeah, we already talked about. Sorry. Go ahead, Fahim. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सैयद भाई ये काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जिनको वो कॉल करने का कह रहे हैं ठीक है. तो काफ़ी दिनों से मैं तो दूसरे एजेंट से बात कर रहा हूँ मैं खुद ही उनसे डील कर रहा था लेकिन सही. लास्ट में वो कॉल पर आए हैं ना तो फिर आप काइंडली उनसे बात कीजिएगा और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जो आपको बतानी है डिस्कस करनी है और
पहले कॉल करें या पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो देख लें पहले? जी जी, पहले इसको जो है ना, मैंने आपको एक भेजा हुआ एंटर, इसको हम्म। कॉल कीजिएगा। इसका ये है कि ये मैंने इसको भी कोई वो नहीं दिया ऑफर वगैरह, तो इसने कहा था कि मुझसे पहले कॉल पर डिस्कस करो, उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, काइंडली आप तो इसे मतलब एंटन से हमने डिस्कस, बात नहीं करी? मुझे ध्यान में आ रहा है हमने कहीं बात करी है इससे। वो कैरी से आई थिंक हुई थी बात आपकी लास्ट। ये वही घर एंटन है तो मुझे जिसमें एक मैंने की थी आपको, आपने, लेकिन वो बिजी था। हाँ हाँ याद है, मैंने आपसे बोला था उसको ईमेल करें कि कितने बेडरूम और कितने यूनिट्स हैं, राइट? हाँ, वो मेरे से मैंने उसका वो भी बनाया हुआ है, ये कहते हैं अपना कैलकुलेटर का ना। हम्म। आपने मुझे बताया था कि हर यूनिट का अलग अलग की इसके तकरीबन 8 बेडरूम से अलग है एग्जैक्टली ना, दो एग्जैक्टली। तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने बनाई हुई है, और फिर इसके दो वो भी थे, कार कार गैरेज भी थे, उसका भी आपने बताया था कि इसको इंटर करना है, जी जी। तो तो वो भी उसके आपको करना नंबर, उसको नंबर रन करने पड़ेंगे फिर, ताकि हम उससे बात करेंगे कि अभी आई विल बी ब्लाइंड कि क्या नंबर ऑफर उसको करे हैं या करने चाहिए है। हैं। मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। हाँ आप शेयर कर दो ताकि मैं नंबर देख लेते हैं। इसने प्राइस कट किया है 413, अच्छा 10 दिन पहले बेसिकली। खैर आपकी बात करने की बात होगा फिर ये। बट आई मीन दिस हाउस इज़ वेरी गुड टू, राइट? बिकॉज इसमें 7 बेड हैं। आई मीन यू कैन, और बोल रहा था 5 फैमिलीज रह सकती हैं और 5 सेपरेट जी एंट्रेंस हैं। आई मीन 5 फैमिली, दैट्स बिल्कुल। गोना बी अ बिग बिग रिटर्न। अगर एक फैमिली आपको 800 भी पे करती है, you're making a lot of money, a good cash and cash return on it, right? प्लस उसके पास गैराज भी है जिसमें आप 100-200 भी बना रहे हैं, it's still pretty good. इसका तकरीबन 71% कैश एंड कैश आ रहा है हमारे पास, जो हाँ, कैलकुलेशन हमने I किया है ना। I can understand, that makes sense. तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ इसको। uh Give me 1 second, guys, give me 1 second. Bro, Mhm. go to the reception. Okay, go to reception, and they're saying to remove the Toyota Camry because they think that I have the black Acura. Sure, I'm in the hospital right now. Call them right now and tell them that this is the situation, that it's our car, we have to switch, we forgot to switch it back. Can Okay, you do sure. that? Okay, bye. Okay, calculator is sent. बेस्ड ऑन सर तो Okay, no worries. I'll take the questions. Any questions here on TikTok? How can you pay more for the property that worth less? Well, we're not paying more for the property. We are paying more in return. What we are doing, we're getting something in return, which is a payment plan, okay? Which is not easy, and it's very helpful for me because I don't have to put all 100,000 cash right now. I can pay it in 6 years, so it's beneficial, and I can save the money 100,000 and buy 10 more property like that and make a lot of money like that. So I don't need to pay all the cash right now. Okay, so this is the property. Uh, let's see the cash and cash. Um, 299. Okay, 326. 10% down up. 10% down. 0% 40 years 600. That's fine. Down payment. Yep, yep. Rent. Um, Property tax. Let's confirm. Property tax and property tax and let me see. Property tax. Let's confirm property tax. I feel like property tax may be a little bit more than what's written in Zillow. Yeah, it could be, but again, we can take it here for now. Um, Property tax is good. 10.5. हमने rehab cost भी लगा दी. Yeah, I mean everything else looks perfectly fine. Um, it's a great cash and cash on that.
let's confirm the rent. Okay. अच्छा, मसला हमारा जो लास्ट टाइम बात हुई थी ना, मसला यही आ रहा था कि हमें रेंट इसका कंफर्म करना है, क्योंकि जी रेंट की वजह से इतना हाई कैश एंड कैश आ रहा है, राइट? तो लेट्स कंफर्म द रेंट रेंट. मैंने कंफर्म किया तो उधर से जो है ना रेंट जीरो रेंट से उसके बाद ही मैंने इसको कैलकुलेट करके डाला है। वेरी वेल, वेरी वेल. सो लेट्स चेक वन मोर टाइम. अच्छा, उसने कितनी बताया, कितनी घर हैं? उसने 4 घर बताया, राइट? अरे मेरे ख्याल से आपने मुझे भी ईमेल में भेजा था कुछ ऐसा. Okay, so there is 2 units. One unit have 5 beds and 5 baths, यस and second unit have 2 beds, 1 bath. It's a unique property, have roughly divided into 5 separate residences under 2 roof. 5 unit. So I will take this as a 5 unit. 5 unit. So that means I don't know how it's 961 gonna का be एक यूनिट structured. हाँ बोले. 961 का एक यूनिट है, हमने 5 यूनिट्स को कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद 80 के ना हमने सिर्फ 2 गैरेज का भी ऐड किया, 160 वो ऐड नहीं, करके वो तो फिर ठीक है, 4000। बट ये बोल रहा है कि 5 फैमिली रह सकती हैं और 5 बेड 7 बेडरूम है, ठीक है? तो आई नीड टू नो कि बेडरूम कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, राइट? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 1 बेडरूम 1 बाथ का रेंट बहुत डिफरेंट होता है बनस्बत 2 बेडरूम 1 बाथ के, या 3 बेडरूम 1 बाथ के, राइट? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो आता है हमने इसमें. किया है वो 1 बेडरूम 1 बाथ का किया है ना। हाँ, हमने जो किया है वो आई 961 थिंक 1 बाथ का किया है, मगर कुछ बेडरूम इसमें से अगर 2 बेडरूम वाले हैं तो उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा ही होगा, राइट? तो हम सेफ साइड लेके चलते हैं, सबको 1 बेडरूम 1 बाथ कंसिडर करते हैं जी और 5 यूनिट पे फोकस करते हैं एंड देन गिराज. ओके, सो लेट मी सो रेंट निकालने के लिए गाइस आपको पता है कि एक्टिव रेंटल हम हटा देते हैं. हमको ये नहीं चाहिए कि जो रेंट पे लगे हुए हैं ये हमारे काम के नहीं जी है, जो रेंट पे जा चुके हैं वो हमारे काम के होते हैं, ठीक है? एनी डिस्टेंस आई एम गोना डू द क्लोजेस्ट वन. सबसे क्लोज हमारे घर के जो होते हैं वो सबसे अच्छा रिकॉर्ड हमें देते हैं. अपार्टमेंट में हटा देता हूँ आई गेस. अपार्टमेंट भी one second. हेलो. Oh, I see. Okay, I'll move the car. I'll move the car. No, I'm not done with the class, but I'll take a break and move the car. Okay, bye. I'm not done. I'm not done until 1 full hour. So, okay, I'll move the car. Bye. Okay, guys, I need to quickly go and move the car. I'll keep the stream on. There is some maintenance. Something has to done. So it's in a basement car. So I need to remove it. Okay. So I'll be right back, guys. Give me like 2 minutes. Guys, I'll be right back. Okay. Give me like 2 minutes.
So what we were doing trying to figure out the rent. Okay, so basically there's 5 separate units, and we will take each as one bath, one bed, one bath, and we need to find the rent. So then I need here, instead of all beds, I'll focus on one, and they don't give us the bed options, sorry, bath option, so I'll leave that. Okay, all right, so looking at this, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, they're all 1 1, very nice. There is no way it's going for 1100 here, but we have to be very conservative, and I will take this option, right? Because 5 different family रह सकती हैं, then उसका अगर 5 family रह सकती हैं इसमें, then we don't have to worry about this, ठीक है? तो 795 or 850, let's go with 800. Okay, yeah, even then हमारे पास इतने it's going to be very good return. Okay, let's see what we have here. इस पिक्चर में हमारे पास अगर हम 800 लेके चलते हैं times by 5, 800 times by 5, so that's 4000, and then plus 80 plus 80, right? उसके 2 गराज हैं और दोनों रेंट पे जा सकते हैं. So Fahim, I get a total of 4160. Okay, that's very conservative number. इससे पैसे कम हो नहीं सकते रेंट के, ठीक है? You have 4635, 71% cash and cash, right? So it will bring it down a little bit, but that's not a problem. Okay, so let me quickly run the numbers here on my side. 299. सैयद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ रही मेरी? अभी आई है. अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि हमने रेंट बहुत कम लेके चलते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, राइट? 72% कैश एंड कैश इज़ वेरी हाई. तो हम बेसिक इस नंबर पे चलते हैं 795, जो कि मैंने 800 लगाया है. 800 times 5, ठीक है, क्योंकि 5 फैमिली रह सकती हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 4000 का, ठीक है? प्लस 80 जो कि 2 गराज का हो गया, राइट? तो मैं टोटल रेंट एज ए कंजर्वेटिव, बीइंग वेरी कंजर्वेटिव, 4160 डॉलर, आई थिंक दैट्स गोना बी द टोटल. या सो मैंने और थोड़ा कम कर दिया, राइट? इसमें इसको दोबारा हम 10% पे ले आते हैं और इसको हम 5% पे ले आते हैं, ठीक है? हमने 5% वैकेंसी, 10% मैनेजमेंट कॉस्ट एंड 10% कैप एक्स. ओके, 29, लेट मी फिक्स ऑन दिस. परचेज प्राइस हमने बताई है 328 की, 328000, 328,900, I guess. Okay, and हमारी जो कॉस्ट थी 32,800. ओके, तो हमने परचेस प्राइस 10% ज़्यादा दे दी, डाउन पेमेंट 10% दे दी. ओह दैट्स व्हाई इट्स नॉट ऑन सेलर फाइनेंस. ओके, डाउन 10% दे दी. एमोटाइजेशन आपने लगाया था 40 इयर्स का, ये भी 40 इयर्स है. तो अब जो कैश एंड कैश रिटर्न आ रहा है 56% आ रहा है, ठीक है? इट्स ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट डील. अगर सिर्फ यहाँ देखा जाए और वो एक्सेप्ट कर ले इसको, इट्स अ ग्रेट डील. अभी तक आपकी इस नंबर्स पे बात नहीं हुई, राइट? उसने बोलता मैं बिज़ी हूँ, मुझे कॉल करना बाद. ओके,
Okay. इसको कॉल करते हैं, इससे बात करते हैं. Let's see if I can do like a 30-year amortization. तो क्या हो सकता है? Still we are good. We're good. We're good. We're good. एक प्रॉब्लम है. Right? The only problem अगर इस पे mortgage है आपको मेरी then आवाज आ रही है सही में? जी मुझे आ रही है आवाज़. एक प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसमें मॉर्गेज कितना है. ठीक है, हम मॉर्गेज चेक करते हैं. Hopefully finger crossed nothing is there. He's saying 0% equity, which is not possible. Not possible. Price change for sale removed, for sale list removed. Imagine 2025 से ये सेल करना चाह रहा है घर को. सो 2023 में उसने घर लिया है 40,000 का. 40,000 का 2023 में घर लिया है और 2025 में 380 का उसने बेचने पे लगाया हुआ है और 380 से आज वो 200 पे पहुंचा हुआ है, कम कर कर करके प्राइसिंग. ओके, तो 2025 12 मतलब 2025 12 6 दैट मीन्स नो 6 12 है. ओके नेवर माइंड. तो ये जुलाई से सेल कर रहा है पिछले साल के और अभी जुलाई आने वाला है, 1 साल होने वाला है. बट वो चालाकी ये कर रहा है कि लिस्टिंग सेल नहीं सेल हुई रिमूव करके दोबारा लगा रहा है, तो डेज ऑन द मार्केट अपडेट हो जाता है. तो 40,000 का इसने लिया. किसी ने मतलब इसने ख़रीदा और उस बंदे ने 50,000 का ख़रीदा था. इंटरेस्टिंग. उसने 50,000 का ख़रीदा था, इसने उसको 40 का बेचा. 40 से उसने शायद काम करवाया. ज़ाहिर है इसमें रेनोवेशन कॉस्ट आई होगी. उसने काम कराया, काम करा के उसने इसको फिक्स करके अब ये बेच रहा है. 5 separate entrance, 5 separate bed and baths. Interesting, very interesting. इसका लेआउट बहुत अजीब सा है बट whatever. अगर ये रेंट हो जाए then well and good. ओके या चलो उससे बात करते हैं, देखते हैं. उसने लास्ट टाइम कुछ बोला था कि मैं बिज़ी हूँ और कुछ भेजना, ऐसा कुछ बोला था उसने या फिर बोला था सिर्फ मुझे कॉल करना बाद में. उसने बस ये बोला था कि मैं बिजी हूँ, भेजने का तो उसने नहीं बोला. ये भी शायद आपकी बात हुई थी लास्ट. Anton speaking. Hey Anton, this is Sayed. I believe we spoke last week on your property on Purdue Avenue or Purdue Avenue. Okay. Yes. I believe you were busy at the time. Do you have a couple minutes to chat now? Yes. Yes. No shot that I was busy. I think you were in the middle of I'm something. never busy. Fair enough, fair enough. Yeah, so basically, I ran some numbers on this. I think you've been talking to Fahim over the email. We were kind of running the number yesterday, so I thought I'll give you a call today just to kind of run the numbers by you. We're under contract, and I have a backup. Oh, So, okay. Yeah, so we're pretty much done on this one. As these guys are, it's a pretty strong cash offer, and they only have a 3-day inspection. Right. And then my other one is 15,000 over asking, and a quick close. Okay. 15,000 over asking in terms of cash, or was it a creative deal? No, the second one is also cash. Both are cash. Both are cash, so no conventional even, hey? It can't go conventional. Yeah, I guess that's what I was thinking. Okay, that makes sense. I mean, if it's under contract, congratulations. I hope things goes well. We were at the seller finance option, so if you think they're not gonna even talk about it, we'll just skip that. Do you have any other properties in the area that kind of go with the similar No, idea, multi-units? No. nothing right now, no. Okay, no worries.
What I'll do, we'll just keep you as a follow up. Maybe we'll check out in a couple weeks and see what's the status on this property and go from there. Okay, How's that sound? thank you, Awesome. thank you. Thank you, Anton. Talk soon. Bye bye. Darn it, guys. This one is a gonzo. And somebody is paying cash over asking. I don't think that's true. I do not think that's true. Um, one of the biggest issue I was thinking this could have, right? उसने बोला ना कन्वेंशनल हो नहीं सकती, वो इस वजह से कि इस प्रॉपर्टी पे वायलेशंस होंगी कि इतने स्क्वायर फिटेज में, राइट, whatever जो स्क्वायर फिटेज है उस घर में आप 5 फैमिलीज को रख रहे हो, राइट? तो दिस घर डेफिनेटली हैव सम सॉर्ट ऑफ वायलेशंस कि किचन क्रैम्प्ड है। अब जैसे ये होता है ना, किचन के स्टोव से अगर कोई चीज़ जलती है से इतना फासला होना चाहिए दूसरी दीवार का कि वो उसको ना पकड़े एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में, राइट? तो वो सब कैलकुलेशन होती है। मगर इसने इतना छोटा सा बनाया हुआ है, छोटा सा किचन बनाया हुआ है, छोटा सा बेडरूम बनाया हुआ है। आई डोंट नो कि वायलेशन क्या हो सकती है, बट it could be an issue. It could be an issue. But and nonetheless, Fahim, basically we have to follow up on this. अगर हम जल्दी भी कर लेते, फॉर एग्जांपल उसी दिन हमारी बात भी हो जाती इससे, सो आई डोंट थिंक कि मिस्टर सेलर लेते ही ऑफर को। ओके But I don't think cash will close. I feel like this will fall through. First one to for sure fall through. Maybe second one would go through as well. तो वो सी तो आप इसको करो कि नेक्स्ट वीक का फॉलो अप रखो। 3 दिन उसने बोले ना, तो आप Okay. नेक्स्ट वीक के मंडे को फॉलो अप रखो। आंसर पूछो कि hey, I'm just following up. You spoke to my manager on this property. We were interested in it, but looks like it's under contract. Any update on the contract? और उसको congratulations बोलना कि congratulations Okay. on going under contract. अच्छा, ये अभी बात हुई है एक क्लाइंट से, तो उसने कहा मुझे कॉल करें, फिर मैं बात करूँगा ना। अभी सिर्फ फर्स्ट मेल की थी उसको। अच्छा, आपने ईमेल क्या करी थी उसको? अभी फर्स्ट मेल, यानी कि जैसे हम फर्स्ट मेल करते हैं, उससे पूछते हैं कि ये वेकेंट है या नहीं, इसमें कोई Right. मेजर रिपेयरिंग तो नहीं है। Okay. तो उसने कहा आप मुझे कॉल करें, डिस्कस करें कॉल पर। Okay, sure. Give me the number and then the मैंने name. शेयर कर दिया आपको। Okay. Let's see if this is a property. Acha, guys, very, 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 very important. Fahim, I'm gonna stop you for a second. I just forgot to mention that. So I'm gonna share my screen, guys, in Discord, and check this out. Okay. So under sources, resources में ये तीन जो है ना ऐड करें। हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे थे कि सिटीज़ कौन से पे ऑफर करें, किस ऑफर करें। तो हम लोगों ने सारे इन्वेस्टर से, तकरीबन 1 महीने पहले की बात है, उससे बात हुई थी कि वो सब अपने अपने सिटीज़ भेजेंगे, राइट? कि वो किन किन सिटीज़ में चाहते हैं कि यहाँ पर उनको डील मिले, राइट? तो हमने जो रिसोर्स वाले ऑप्शन में उसमें 3 सेक्शन बनाए हैं। एक कैश ऑफर सिटीज़, अगर आप कैश ऑफर पे फोकस कर रहे हैं टोटली, तो इन सिटीज़ पे आप जाएंगे। बहुत सारे सिटीज़ हैं, ओके, इट्स अनकाउंटेबल सिटीज़, ठीक है? बट आपका मूड हो रहा है कि भाई आज मैं जाऊंगा टेक्सास पे, तो टेक्सास पे ये सारे सिटीज़ पे आप कैश ऑफर कर सकते हैं, ठीक है? अगेन 150 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ठीक है, बट 150 से नीचे है तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? बट कैश ऑफर हियर ऑल द प्लेसेस, ठीक है? आई डोंट नो ये लिस्ट ऐसी क्यों है, दूसरी लिस्ट थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल है, बट डजंट मैटर। तो एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी, टेक्सास, फ्लोरिडा एंड या, तो ये जो इस स्टेट्स में जो सिटीज़ हैं आप इनको फोकस करें और इन पे कैश ऑफर दें, ठीक है? अब आप बोलते हैं कि नहीं मैं सिर्फ क्रिएटिव ऑफर्स करूँगा, सेल्फ फाइनेंस की ऑफर, मॉर्गेज टू, सब टू, फलाना ढमकाना, तो उसके लिए ये सिटीज़ हैं, ठीक है? ये स्टेट्स हैं अलाबामा, एरिजोना, जॉर्जिया, इंडियाना, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, टेनेसी, टेक्सास, फ्लोरिडा, और उनके सिटीज़ हैं, ठीक है? अगेन इतने सिटीज़ हैं, आई थिंक 500 प्लस सिटीज़ हैं जो हमने बैठ के सबको एक साथ सॉर्ट आउट किया, ठीक है? तो 500 प्लस सिटीज़ हैं सिर्फ इसके, ठीक है? अच्छा, सेल्फ फाइनेंस नहीं कर रहे और आप सेक्शन 8 की बात करते हैं, सेक्शन 8 हमने अभी पढ़ा नहीं है। आई विल टीच यू गाइस इन अ बिट। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह रेंटर पे कर रहा है उसी तरह रेंटर की जगह गवर्नमेंट पे करती है, और आप
जो लोग होते हैं वो वेलफेयर पे होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जब पे करती है तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ पेमेंट, वो हमेशा टाइम पे होती है, वो हमेशा कभी लेट नहीं होती, वो पूछती नहीं है डिस्काउंट का, वो एक सेट उस पर होता है। तो अगर आप सेक्शन 8 की ऑफर्स कर रहे हैं उन हाउसेस पे, तो देन मिशिगन, अलाबामा एंड ओहायो वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, कैश ऑफर में कुछ ऐसे सिटीज़, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो सेल्फ फाइनेंस में भी ओवरलैप कर रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस में बहुत सारे सिटीज़ हैं जो कैश में एंड देन कैश इन ओवरलैप, ओके। तो आप पूछ रहे होते थे कि कौन से सिटीज़ में हम ज़्यादा करेंगे और किस सिटीज़ में कैश ऑफर जल्दी होगी। मैं आपको 2-3 बताता था क्योंकि मैं उनमें काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वो इन्वेस्टर्स उनमें हैं। अब इन्वेस्टर ने जब वाकई में हमें लिस्ट भेजी और अपना पोर्टफोलियो दिखाया तो हमको पता चला ये काफ़ी जगह पे कर रहे हैं। इन्होंने हमको बताया वर्बली डिट्रॉइट था, तो फिर हमने वो सिस्टम में डाल दिया, तो हमें सिस्टम से पता चल जाता है कौन सा इन्वेस्टर किन किन जगह पे ख़रीद रहे हैं और किन किन जगह पे लेना चाह रहा है, मूव होना चाह रहा है, ठीक है। तो कैश ऑफर अगेन अनकाउंटेड सिटीज़ आपके पास और एक सिटीज़ में इतनी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी कि आप 2-2 महीने भी लगा लें तो आप वो प्रॉपर्टी नहीं कर कंप्लीट कर पाएंगे, प्लस हर रोज़ नई प्रॉपर्टी आ रही होंगी, ओके। देन क्रिएटिव ऑफर्स cities and then section 8 offers, okay, these three things. Again, it's in the resources, hashtag cash offer cities, hashtag creative offer cities, or hashtag section 8 offer, okay. Hopefully that makes sense and hopefully this is of some use to you guys, ताकि अगर कोई चीज़ हो तो आप बस उसको सिटी देखें, कोई भी सिटी पिक करें and then go after it. Okay, let's go back to Fahim's deal. So this is the house, from inside, looks okay. Light rehab I think should do just fine. What is that, leak or just bad? Yeah, light rehab, 5, 6, 7 or 10,000 should be fine. Adorable housing, add to investor portfolio, blah blah blah, house rented 20 days. Okay, तो आपने डेविड को ना सेल्फ फाइनेंस ऑफर करी है ना कैश ऑफर करी है, उसने जस्ट बोल दिया छूट दे के कॉल करो, करेक्ट? लेट्स कॉल हिम, दिस गाय। 81637. um इसको मैं फ़हीम बन के बात करूँगा, ठीक है? आप ओके। David, Hey David, this is Fahim. I believe we've been speaking over the email on the property on Hardest, Hardesty? yeah, Hardesty Avenue. Yeah, I wanted to kind of ask a couple of questions if you have a minute right now. Sure. So I'm just looking at the picture. Doesn't look like a big rehab cost. What do you think? I'm on the right track? I do. There's really, I mean, it's livable like it is. It would just depend on what you would want to upgrade, possibly either remodel and flip or raise the rent, you know, if you wanted to maintain it as a rental. Okay. And it is currently rented? It is. Okay. And I believe they pay $850. I'd have to look. Okay. And they know it's low. They've been there for a long time. I sold this gentleman this house, Okay. years ago. And it's been the same renter, I believe, when he bought it. So they've been that's there for a long time. 2018 it says. Okay, wow. Yeah, that's when I sold it to him. So I know they've been there that long, but I think they might have been there before he bought it. Okay. I think he may have bought it with them in place. And they probably want to continue, I'm guessing, if they've been there for a long They time. would, but they also know that their rent's lower than market value. Mm-hmm. So they would either have to increase their rent
rate, or they'd have to move. Right, right. They're aware of it. Okay, and they're okay if we were to increase, or they just want to move, they can do that too, right? They would do either depending on what the rate increase was. Okay, okay. And let me look and see if I've got a copy of that lease in the file. I'm not sure that I do. I know it's at my office, and I'm not at my office, but I think That's it's okay. 850 is what they say. Okay, that's okay. I mean, we'll just go with this number. I mean, for sure, 850 is not gonna make sense in terms of cash flow. But again, they are aware of that. That's fine. Zillow is giving somewhere around 1200 to 1250. Does that sound about right? It does. Okay. Probably 1150 to 1250 is probably, or 1200 even is probably fair market. Okay. Very nice. Yeah, at 1200. I have a program too. You ever use the program called Rotometer? Yeah, 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 I use that one. You might check that one as well. sure. Yeah, I've account there as well. Okay, so I see the renter is there. It's in livable condition, potential to flip, and then increase the rent. Okay, very good. Do you know if seller is open to creative offers, or you just want to get out? That's it, type of He thing. just wants to get out. This is the last one of his portfolio. He's diversifying. The Okay. last one to sell. He wants out of it, and then he's actually going to sell his personal residence and buy a larger residence for I himself. see. And do you think there's a wiggle room at 149, or he's pretty firm on that? I think there's always room for negotiation. I mean, I don't think he's going to give the property away, but at Oh, the for same sure. time, I think I think there could be options there. Okay. Because I was thinking I have few properties in Cleveland, a good management company, good contractor, good flipper in contact. So we can definitely come in as a flipper and flip this, or if we're able to do creative finance, we'll just stick with the current renter and just run it as it is, as long as we can run it, right? As long as the cash flow makes sense and things like that. So the renter doesn't have to go out, but again, we can just flip in and get the increase the rent too. The calculation would of course would be different if you're doing seller finances. I'll probably come at over asking, right? Just to kind of incentivize the seller and see if he's sort of okay to kind of entertain this offer. If not cash, we can definitely, that's an option. I'll just run the rehab numbers with my contractor and kind of get back to you on this. How's that sound? Sure. The only thing I would say about anything creative is an appraisal is going to be involved. It's not going to appraise much over probably 155 maybe. Right. So I don't think just be mindful of that, I guess. Right, for sure. We will not do any appraisal on this property because again, if you're doing seller finance, we will take your word and then give you 10%. The only thing is that at the balloon, we will have to have 25% of the interest in the property so that we can refinance, right? That's all technically we need at the end of balloon. But in terms of appraisal, we don't do appraisal on this level of property. Again, multifamilies we usually do. Make Sure, sense? I understand. I just don't know how open he's going to be to that. Sure. But we'll see what happens. Okay, sounds good. So we'll work on both offers. We'll run some numbers and probably get something back to you by tomorrow, the latest. Sounds good. Thank you so Sounds much. good. Thank you so much. We'll talk soon. Bye-bye. Take care, David. Okay, so looks like he's maybe open to seller finance. The appraisal problem is true because he knows that the house doesn't worth the much amount of money you're gonna give him, right? For example, 150 he's asking and you give him 10% more, let's say you end up giving him 170, he's gonna be like, yeah, that's overpaying for the property, right? So you're over leveraging yourself, but in return you're getting a small payment, 7-year balloon, you're happy because in 7 years the property will appreciate a little bit, plus you're paying down the principal as well, so then it's gonna have 25%. So Fahim, run the numbers on seller finance and cash. Okay, cash you have to go 60 cents on the dollar. Okay, which is 149 कितना करेंगे 60 0.60 0.50 0.60
0.60 क्योंकि इसमें टेक्निकली तो हमें स्टार्ट 0.50 से करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी काम होगा अगर हमें रेंट इंक्रीज़ करना है। रेंट ऐसा ही इसी बंदे के रहते हुए तो नहीं हो सकता इंक्रीज़, हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा और फिर रेंट देना पड़ेगा, या ही इज़ एग्री टू इट, इट्स अप टू हिम। But 0.6 cash offer, okay. 20 days on market है, I'm pretty sure he's getting low cash offers और वो ले नहीं रहा, ठीक है, और उसने कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया हुआ, which is kind of weird. ठीक है। But anyways, आप उसको 0.60 से कैश ऑफर दें एंड सेलर फाइनेंस की 10% एक्स्ट्रा दें, ओके, और वही 10% डाउन दें और वही कैलकुलेशन रखें। बट जो उसका रेंट होगा ना, जो उसने बताया 850, उस पर सेलर फाइनेंस की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, अगर रेंट सेलर फाइनेंस तभी पॉसिबल है तब वो रेंटर रह रहा है घर में। अगर रेंटर मूव करता है तो फिर ये कैश ऑफर बन जाएगी, क्योंकि फिर हमें फ्लिप करनी पड़ेगी तो प्रॉपर्टी। अगर अभी रेंटर रह रहा है और उसको ही रहने देते हैं इतने ही पैसों से, तो हमने कैलकुलेशन 850 के रेंट पे करनी है, उस रेंट पे नहीं करनी जो अभी मार्केट का चल रहा है। अब जिस तरह 2018 से अब तक ये बंदा एक 850 रेंट देते हुआ आ रहा है, तो हम भी 2026 से लेके 2035 तक 850 में ही रखेंगे, और अपनी मतलब 6 साल का जो अपना टर्म होता है वो इसी तरह गुजारेंगे, ठीक है। बट मेक श्योर आप 850 का रेंट ले रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले रहे, ठीक। ओके। ओके। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा ये बताना कि एक मेरे पास और प्रॉपर्टी है, उसमें मैंने पहले सेलर फाइनेंस दी उसको, तो उसने उसको रिजेक्ट किया। फिर ठीक है। मैंने कहा उससे, जितना मैंने बात की, मैंने कहा कोई आप क्या मसला है, क्या वजह क्यों नहीं दे, तो उसने कहा मॉर्गेज है मुझ पर। तो फिर मैंने वेरी उसका गुड, मॉर्गेज की डिटेल उससे पूछी, सही तो है, उसने सारी डिटेल्स वगैरह दी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। काइंडली मुझे इस पर भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। श्योर। Do closing costs always covered by the buyer on the both side? Yes. जो भी इन्वेस्टर्स को हम लेते हैं ना, हैदर, हम इन्वेस्टर को बोलते हैं कि आपको क्लोजिंग कॉस्ट पे करनी है, ये पैसे आपने अपने जहन में बिठा लेना है, राइट। वो इस वजह से कि हमारे पास जो क्लोजिंग कॉस्ट की कंपनीज होती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बाय और सेल कर रहे होते हैं, तो उनको चीपर मिलती है। अब मम एंड पॉप जाके, अम्मा अब्बा या फिर कोई भी नॉर्मल बंदा जाके उसको पैसे लेगा तो उसको बहुत महंगी मिलेगी वो टाइटल कॉस्ट, ठीक है। तो इस वजह से हम हमेशा कोशिश करते हैं हम ही पे करें। अच्छा, ये आपने बताना नहीं होता फ़ौरन, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना होता है। जैसे ही वो आना कहानी करे, बोले कि नहीं थोड़ा सा ये बढ़ा दो, थोड़ा सा वो बढ़ा दो, फिर आप यूज़ करते हैं क्लोजिंग कॉस्ट, ठीक है। अगर वो नहीं बताता, आपकी डील पे ओके हो जाता है, हम डील क्लोज तक चले जाते हैं, तो उसके लिए एक बोनस होगा कि भाई ओ क्लोजिंग कॉस्ट तो ये लोग पे कर रहे हैं, वेरी नाइस, ठीक है। तो आपकी डील और मजबूत कर देगा। ऑब्वियसली मेक सेंस, ओके। तो हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, प्रॉपर्टी का पेमेंट ड्यू बोल रहा है 3800। दैट्स अ हाई मॉर्गेज माय फ्रेंड, unless you are multi unit property. No, you're not that big, you're not that big. देखिए इस ये प्रॉपर्टी ना बहुत प्रॉब्लम में है। अब लेट मी सी कि कितना मॉर्गेज रहता है। देखिए प्रिंसिपल बैलेंस 200,000 राइट, $248,000, 6.99%, so bad interest rate, right? 6.9 is a bad one. Escrow balance 1,400, principal paid in 2025 70, interest paid in, I mean think about this guys, 17,000 he paid in interest. Where is that money going? In the thin air. Anyways, अब आप देखिए ये इसकी 5 मंथ समरी है, ठीक है। प्रिंसिपल पेड उसकी मंथली जेब से जा रहा है 3,800, ओके। प्रिंसिपल पेड इन दैट 3,000 इज $680, ठीक है। $600, ऑलमोस्ट 4,000 में $600 जा रहे हैं प्रिंसिपल की तरफ, और इंटरेस्ट लग रहा है $4,280। इमेजिन, $4,000 का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और $600 की आप पेमेंट कर रहे हैं। दिस इज वाई इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, ऑनेस्टली। एज फीस एंड चार्जेस 5,000 में से सिर्फ 600 बेचारा पे कर रहा है। वेरी वेरी बैड डील बैंक की। इसका जो घर है
Let's see how this house looks like. I mean, it's also a single family. मैं कितना भी नाक रगड़ लूँ, मुझे 5,000 पर मंथ इस फैमिली पे कभी नहीं मिलना है, राइट? सिंगल फैमिली पे 5,000 कौन आपको देगा इसका रेंट? और लुक एट दिस, इज सच अ ओके। ओल्ड हाउस, सच अ ओल्ड हाउस। ये वही वाला सेलर है, इसका इसके सर के ऊपर पानी है। ये ओ 350 का इसने लगाया हुआ है, और ये ओ करता है 250, ठीक है? उसने 100 ऊपर लगाया हुआ है, 43 डेज ऑन द मार्केट है, उसको पता है 100 ऊपर लगा हुआ है, एजेंट की कमीशन होगा कोई 20,000, इसके पास कुछ 80,000 या 70,000 बचने हैं। और उसमें से भी अगर आप मतलब 65,000 उसके पास जेब में जाएंगे, और उसको इस प्रॉपर्टी से बाहर निकलना है, क्योंकि 5,000 पर मंथ ये पे कर रहा है, और इसका ना रेंट है ना कुछ है, राइट? ही इज इन टफ। हम टेक्निकली ये हमारे लिए ये प्रॉपर्टी कोई काम की नहीं है, क्योंकि इतना इतना चले, मैं अगर हम ज़िलों पे जाते हैं और रेंट चेक कर लेते हैं, मे बी हम रॉन्ग, ओके, मे बी आपको 5,000 का रेंट मिल जाएगा। देख लेते हैं एंड सी व्हाट्स द स्टेटस ऑन दिस। ज़िलों का अगर हम ये नहीं लेते, हम तो हमेशा इससे कम लेते हैं एज अ कंजर्वेटिव। 2,000, राइट? अब उसने लोन तो इन्फॉर्मेशन भेज दी, अब आपको 3,000 महीना अपनी जेब से रखना है, रेंट मिलने के बाद। दिस प्रॉपर्टी इज़ बैड, इसका कुछ नहीं कर सकते हम। उसने बहुत बुरी ओके। डील करी है बैंक से। ये प्रॉपर्टी एट द एंड बैंक के पास वापस चली जाएगी, मिस्टर सेलर को बैंकरप्ट होना पड़ेगा। दैट्स द ओनली सोल्यूशन। कोई भी इन्वेस्टर्स में आएगा नहीं, अनलेस कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको कैश ऑफर देगा 2,400 की, और वो कभी लेगा नहीं वो ऑफर, आई नो। तो आप ये करके देखो उसको, उसको बोलो कि योर इंटरेस्ट रेट इज़ वे टू बैड, आई जस्ट पे द प्रिंसिपल बैलेंस, ओके? और बोलना मेरी ऑफर प्राइस है कि 2,444, आई जस्ट पे द हाउस प्राइस। और उस पर देखो क्या बोलता है। और उसको ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि ये 150 से ज़्यादा कैश ऑफर है, राइट? तो हम उसको टेक्निकली तो हम नहीं बोलेंगे, बट मैं देखना चाह रहा हूँ हाउ फार ही कैन गो। तो उसको बोलो कि दिस हाउस आई कैन नॉट टेक ओवर द मॉर्गेज, द बेस्ट आई एम थिंकिंग आई कैन डू वुड बी अराउंड द करंट प्रिंसिपल बैलेंस, ओके? क्योंकि अब देखो, ओरिजिनल प्रिंसिपल बैलेंस जो ओरिजिनल जिस पे उसको लोन मिला था वो 248 का मिला था, ठीक है? आउटस्टैंडिंग सर। बैलेंस 244, ठीक है? तो इसका 1 रुपया भी, समझ ले 4,000 इसने पे किया, जो कि आपको पता चल रहा है कि उसने एक ही महीना पे किया, उसके बाद ही वापस सेल कर रहा है, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखें। ये वही वाली बात है, जो बंदा डूब रहा है, अब इसको सेल करता है 248 का भी, तो उसको 10,000 15,000 भी जेब से लगाने पड़ेंगे, तो जब भी वो 100,000 ऊपर रख रहा है, ठीक है? तो अब बल्कि हम इसको कैश ऑफर भी नहीं दे सकते, क्योंकि कैश उसको मिला ही इतना है 248 में, राइट? तो आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज़ नो गुड, नो गुड, बिकॉज आप उसको इतने पैसे भी देते हैं, आपको कैश देना पड़ेगा, आप कैश नहीं दे सकते। इसका मॉर्गेज आप ओवरटेक कर लें, तो मॉर्गेज ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको 5,000 मंथली देना है, तो वो तो वैसे ही मेक सेंस नहीं करता। तो दिस प्रॉपर्टी इज ओके। प्रीटी बैड, वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम इट। He made a very bad deal with this with the bank. Okay. ओके। ओके, थैंक यू। No worries. Okay, let's go to the next person in the line. सॉरी, अपना सैयद भाई, वो कैरी से आपकी क्या कन्वर्सेशन हुई, वो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं अपने उसे Let me see. अपडेट करूँ। Carrie की जो मैसेज आया था, I can make you pay. मिस कैरी का मैसेज आया था आज सुबह में। उसकी कल मेरी बात हुई थी कैरी से, मैंने उसको समझाया था इस तरह की हमारी बात चल रही है, फ़हीम से आप बात कर रहे हैं। तो उसको मैंने बोला था मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, तो मैंने उसको टेक्स्ट पे पूरी ऑफ़र भेजी थी। तो 2-3 क्वेश्चन करके उसने बोला था ठीक है मैं सेलर से बात करूँगी। आज उसने बोला था गुड मॉर्निंग, द सेलर हैज़ डिक्लाइंड योर ऑफ़र, शी इज़ ओपन टू अनदर ऑफ़र, शी इज़ ओपन टू अनदर ऑफ़र
um, from you, but I would like some little more structure on it. आपने इसको आप ईमेल चेक करें, आपने इसको क्या क्या ऑफर दी हुए हैं? मैंने तो अभी ऑफर नहीं उसको कुछ भी दी थी, सिर्फ अभी हमारी एक बात हो रही थी और आपको डिटेल्स बताई थी आप, फिर अभी ऑफर तो मैंने कोई नहीं दी उसको। वो तो बोली शी इज ओपन टू अनदर ऑफर फ्रॉम यू बट वुड लाइक लिटिल मोर स्ट्रक्चर्ड एंड हैव मोर डिटेल्स ऑन इट। इसका मतलब कोई और है। कंफर्म है आपने कोई ऑफर नहीं दी थी? नहीं, मैंने अभी कोई ऑफर नहीं दी। Okay, give me 1 second. Let me just answer. Zub Abuzar Sajid, sir, please tell me the method of sending email. Um, Purchase price multiply by 0.70. अगर इसमें कोई काम नहीं है, प्रॉपर्टी में ब्रांड न्यू है, जो आंसर आएगा आपने वो ईमेल कर देनी है, दैट्स इट। उसको एजेंट को ऑफर करो, 100,000 की प्रॉपर्टी है, 70,000 एजेंट को ऑफर करो और बोलो कि इस पे मैं आपको खरीद सकता हूँ। वो हाँ बोलता है तो आपने हैशटैग सबमिट में जमा कराना है। Bro, Harry send you an agent details. Yes, I'll get to Harry in a bit. Okay, so Carrie, I don't know what she's saying. What she's saying. Okay, let me call Carrie. You've reached Carrie Kaufman with Compass Realty Group. Please leave a message and I will return your call as soon as possible. Thanks so much. Hey Carrie, hope you're doing well. This is Sayed just returning a call on your message that Mrs. Silla has declined the offer. I want to know why. I want to know if I can improve the offer and can I give him again. You did mention she's open or she's open to a different structure of the offer. Yeah, I would love to know what that looks like. You also ask if I own property in Kansas City. I personally don't own it, but the investor group I'm with, we own many properties in Kansas City. I wouldn't mind sending you a portfolio on that as well. All right, we'll chat soon. You can send a text as well. We'll go from there. Thank you. Bye bye. Yeah, yeah. We need to send Let me see. Price increase. कैरी ने प्राइस इंक्रीज करी है? That's new. Update kitchen property is being sold as a part of six. Oh, maybe you know what? फ़हीम हो सकता है ये बोल रही हो कि अगर सेलर फाइनेंस की ऑफर दे रहे हो तो मुझे एज अ पोर्टफोलियो दो। मे बी वो ये बोलना चाह रही है। आई गेस उस पर यही बात हुई होगी हमारी, या विच इज़ यही बात हुई ना कि हम तो हमने इसको $1 मिलियन की ओवर आस्किंग दी है। या ओके, नेवर माइंड, दैट्स फाइन। फ़हीम इसको आप फॉलो अप पे रखो। हे जिसको बोल दो ओके, नो वरीज। उसको आप ये बोल दो कि मैंने कॉल करी थी। I spoke to my senior manager. He tried to call you and kind of show some numbers or discuss. ठीक है? And then we go from there. Sorry, मैं म्यूट था। आपने कुछ बोला तो नहीं? नहीं, बस ये इसकी डिटेल है। मैं ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी भेजा। अच्छा, सही है। ये वाली असल में इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है। एक और मसला मुझे याद आ गया, उसमें एक ही पिक्चर में बहुत सारे पिक्चर थे घर के। आई रिमेंबर दैट। या एग्जैक्टली। इसमें एक दो कॉन्डो हाउस भी हैं, राइट, जिसकी 150 फीस थी। दैट्स ओके। ओके, तो इसको आप फॉलो रखो। मुझे वो फ़ोन सुनने के बाद मैसेज कर देगी, मैसेज वो सही से कर देती है तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू देयर। ओके, details in your inbox. I can't listen to you. Okay, all info sent about Garcia. 1 second, Ahmed. What's about Garcia? So if you have to send a contact Garcia, yeah, exactly. 18 4 month 300 14 59. Yeah, exactly. Yeah, Ahmed, you got it right.
I will make sure right after the class I will go through it. Um, let's talk about Harry's deal. Your camera is off, man. Let me fix it if it's off. I think it's on now. Um, I'll go with Harry, and then Heather, I will go through your things. I will make sure we go through everyone's property. Okay. The thing is, there will be a time, right? As we grow in the community, there will be a time there will be so many agents to call, so many people, and I cannot call everyone. Okay. So at this time, I would ask your patience. Okay, क्योंकि ये मेरे साथ होता है दूसरी क्लास में. अभी तो मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पास जो क्लास में आने वाले लोग हैं वो तो ज़्यादा नहीं है. क्लास के बाद के लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट? 30 40. So hopefully I will try my best to increase the class time to 2 hours to 3 hours अगर मुझे टाइम मिला वो. And then हो सकता है आप एक दफ़ा आए बोले कि मुझे एजेंट को कॉल करना है, मैं ना कर पाऊँ, उसको फिर हम कल फॉलो अप पे रखेंगे. Anyways, but for now we can go through it. No issues, no issues. I'll try my best to make sure we get through everyone's today as well. Okay, so the discussion is this is the Hussein's client. Hussein, I'm looking at your client right now. I watched a house today. It listed just 3 days before on Zillow, and it cuts 100K price, but there is no detail about agent. um, अगर एजेंट की डिटेल्स नहीं है तो उसमें कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई कंपनी का नाम होगा. तो कंपनी के नाम से कंपनी फ़ोन कर सकते हैं या कंपनी ईमेल कर सकते हैं, बोले कि भी ये प्रॉपर्टी आपके एजेंट ने लगाई हुई है और उससे बात करें, राइट? अच्छा, अगर उसने 100 के प्राइस कम करी है 4 दिन में, आपके लिए बहुत अच्छी साइन है कि आप उसको उसको बोलो कि मैं ख़रीदती हूँ और उसको बोलो कि मैं लेता हूँ ये प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको जल्दी है बहुत सेल करने की. ठीक है, कोई भी मसला हो सकता है, डिवोर्स, kick out from the US, whatever. So try that. Okay, so let me see what the property is here. So this is the property we have. The asking price is 197,500. The offer is 137,900 cash offer. Okay. Um, I'm not sure what the calculation is here. So let's see. 197,500. Is it 0.7 Hussein or what? 0.5 or 0.6? 9,7,500 times 0.7, I think. One three seven nine hundred, 138,900. So it's less than 0.7. Okay, which is a good thing. Which is a good thing. It's under 150. Also a good thing, right? अब ये जो है ना कैश ऑफर है. Okay, so far so good. जो भी मुझे दिखा है good. Cleveland City is very desirable. Good. House की condition बाहर से it looks great. No, even inside it looks beautiful. Recently renovated house. Everything looks good. Beautiful, beautiful house. I don't know why there's a mirror like that. That's like a magic mirror in the middle. Oh, I guess this room is small, but it's okay. Goodness, look at the floors. Okay, beautiful property. Seller finance would be probably the best possible deal on this house, but cash is also good. Okay, let's see. Welcome to the beautifully remodeled 3 bedroom, two hopefully updated, thoughtfully updated to offer comfort and style. Residence features referred mirror, furnished, blah blah blah. Ideal situation in prime location. Home is exact. Yada yada yada. Clear. Let's see how much he bought it for. 59,000. He's selling for 197. Okay. 2025 में इसने खरीदा था, 3 4 5 महीने के बाद उसने बेचा है, almost 7 8 months के बाद, which is kind of odd. जब आप प्रॉपर्टी फिक्स करते हैं उसको फ़ौरन बेचना आपका काम होता है, बट ये इतना टाइम के बाद बेच रहा है. I don't know. But हुसैन इसने ऑफर कंप्लीट कर दिए. She wants proof of fund. Okay, that's good. We will send proof of fund, and I'll call her right now, and make this happen. I don't see any problem. The thing is, एक और चीज़
अच्छा, अभी जब हम कैश ऑफ़र करते हैं ना, तो कैश ऑफ़र वाले को ये भी चाहिए, ज़हन में होता है कि मुझे इसका रेंट कितना मिलेगा। तो जब हम आगे बेचेंगे ना, तो हम इसका रेंट निकाल के सारा कुछ कैलकुलेशन करके बेचेंगे, ठीक है? तो फॉर नाउ मैं इसकी क्विकली जो है रेंट एस्टिमेटर करते हैं, इसका रेंट कितना आ रहा है। हुसैन, आपको पता है ये रेंटेड है प्रॉपर्टी या नहीं? ओके, 3 बेडरूम वन बाथ, अगर हम 1300 का लेते हैं, तो हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा इसके लिए। लिस्टेड प्राइस 197, offer price is, what is that, 137,900. तो बेसिकली ये 30% ऑफ है। I checked it but now forget. That's okay, you can check the emails. I'm still on your property. Just check if you can find the email. I mean, down payment, let's say 0, because down payment तो उसकी जा नहीं रही है। How would that make sense? I guess इस पे हमें नॉर्मल कैलकुलेटर करना पड़ेगा, इस कैलकुलेटर के अलावा। ओके, ज़ीरो बोल रहा है कि 1700 रेंट है इसका। लेट्स डू एक्टिव एनी डिस्टेंस 1। ओके, 1700 ये बोल रहा है, 1750 पे ये किया हुआ है। 1750 1600 500। Okay, let's go in the middle. Let's just go with 1500. 1500 minus 20%, 25 actually, for vacancy as well. Okay guys, you can see my screen, okay? अब मैं जो कर रहा हूँ, मैं ये अब मैं इन्वेस्टर के जहन में आ गया हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इसमें इतना कैश डालता हूँ तो मेरे पैसे कब मुझे मिल जाएंगे, ठीक है? अब क्योंकि इसने कैश सारा डाला है, तो हम टेक्निकली कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कैश ऑन कैश इस पर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि $0 पे इसने पे किया है, नहीं, इसने पे किया है, पे करने के बाद की कैलकुलेशन है। तो अब 1500 उसका रेंट आ रहा है, माइनस 25%, ये हमारी कैपेक्स, मैनेजमेंट कॉस्ट, फलाना धमकाना, ठीक है? तो हमें ये पता चल गया कि 1125 इसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है? नाउ 1125 कॉस्ट में से अगर कैश पे इसने लिया हुआ है तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी हिज प्रॉफिट। बट अगर वो उस पे लेता है रेंट पे, सॉरी मॉर्गेज पे, इसको तो कम से कम 600-700 की इसको पेमेंट देनी पड़ेगी, which still leaves him some money. No, I think it's good. We can go with cash offer. अगर इसको, हुसैन, is there a possibility for seller finance offer? आपने इसको seller finance offer दिए इस घर पे? और हैरी आपने? Let me know. Are you here, Hussein? Harry, although she's asking for the proof, but no, I didn't. He's dealing. Okay. सेलर फाइनेंस की आपने ऑफर दी है और उसने रिजेक्ट कर दी, उसने कैश की बात करी है। नो, मैं पूछ रहा हूँ सेलर फाइनेंस की, वो तो कैश तो मैं समझ गया, उस पर प्रूफ ऑफ फंड्स की ज़रूरत है। आपने सेलर फाइनेंस की ऑफर करी, जैसे 10% ओवर आस्किंग वाली? प्रॉप वायर देखते हैं इस पर कितना इसका मॉर्गेज है। वैसे इसने ख़रीदा तो बहुत ही कोई सस्ता है, या इसने ख़रीदा जैसे अगर 50,000 का ख़रीदा है तो आई मीन ये आराम से उसको पे कर सकता है, इतना मसला नहीं होगा। तो इस पर सेलर फाइनेंस की भी ऑप्शन, 2 बेड्स 1 बाथ, इसमें 3 बेड 2 bath, that's weird. But she needs a proof of funds. Okay. Okay, let me call and I'll see if she's okay to seller finance too. I will send her the proof of funds and things like that.
and get this property under contract. Carlia का number 21624. Okay. You're Anna, right, Hussein? Hello. Hello, is this Carlia? Who's calling? This is Sayed. I think you have speaking to Anna, one of my partner on the property. I mean, Yeah, we're not interested. No home sellers. Bye. what just happened? What just happened? I'm gonna call her again. This is Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the what just happened? In a meeting, call you back. Oh, she's in a meeting, maybe. I don't know. She said that she is wow, that was a little rude. I'm not interested. Boom. Okay. Okay. Well, we gotta call her again, right? So we did it, and she's in a meeting apparently, which I think she's lying. Let's call her back tomorrow. And again, we're not gonna let him go, right, guys? जो सेलर इतने इश्यूज में है, एजेंट इतने मुसीबत में है कि वो उस तरह फ़ोन हैंग अप कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बाकी लोगों से भी यही कर रहा होगा, राइट? तो अगर वो ये कर रही है सब बाकियों से, दैट मीन्स इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम इस एजेंट के पीछे लगे रहें एंड मेक श्योर वी गेट दैट डील. ओके, anyways, Anna and Harry, keep on it. I will call this lady tomorrow. If she calls me today, I'll talk to her for sure. Let me actually save her number, so that I don't forget. What is this about? Street. If she wouldn't said I'm in a meeting, I would have called her again until she picked up. But if she is in the meeting, then it would be a bad reputation for us. So I would rather not bother her. I'm gonna write in the bracket rude. Then I will know. Okay, well, Anna, it's in front of you, and Harry. Let's follow up tomorrow on the same deal, and then we go from there. We have another property. Sure, send it to me. By the way, thank you for sending the information like that, right? I appreciate it. I get the listing price, he offer, and the name of the person, so that's good. Hopefully it's not the same lady. It's not. That's good. Listed price 175, and he offer 140. This is the Tesson Street. Hussein, what is the calculation you use on this property, Tesson Street? I want to run the numbers, but I want to see what you guys thought. So, yeah, it's a little bit more than a 0.7. It's like 0.8.
78779 type of thing, which we need a little bit more discount than this. Okay, let's see the house condition. Okay, let's see the house condition. House condition is livable, 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 decent. What is this? Issue with the carpet? Oh, it's just the entrance, but there's something wrong with the carpet here. Yeah, this is something wrong. Okay, so it needs a little bit of work then. Carpet needs to be changed. Carpet is fine there, fine there, fine there. Very old flooring. Oh my goodness, what is this? No floors? No floors. No floors. Yeah, this is now a flip offer. We cannot do a seller finance offer on this. Okay, it has to be the cash offer. There's no other way because so much work it needs. Okay, so 175,000. No, the offer that you guys have did is not gonna work, guys. I'm sorry, 140 offer on 175 house with a lot of work. Hussein, this will be very very tough because आपने for example 140 की offer दी है, right? आपने ये 140 की ऑफर दिए, करेक्ट? इसमें जो काम है इजीली फ्लोरिंग आपकी कोई 6000 की पड़ेगी, किचन का फ्लोरिंग अबाउट 2000, आपका कारपेट पूरा रिमूव होगा और पूरी फ्लोरिंग एक बेडरूम की मिसिंग है, तो एटलीस्ट I'll say 25 to 30. ओके, तो आपकी ऑल इन घर ख़रीदने के बाद जिस पे आप बात करें, आपकी ऑल इन कॉस्ट 170 होगी, ठीक है, जिस पे आप घर को फिक्स करके बेचने जाओगे मार्केट पे, ठीक है। और एहतियातन इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू देखते हैं क्या क्या आ रही है, ठीक है। तो हमारी ऑल इन कॉस्ट 170 आ रही है और जिलो बोल रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी प्रॉप वायर बोल रहा है 220, तो उसका मतलब है आपके पास 220 को माइनस कर दें इसमें से तो कुछ 37,000 आपके पास बचेंगे, राइट? एंड 37,000 इज़ नॉट इनफ बिकॉज 37,000 में से अगर वो उस नंबर पे बिकती है, जो कि इस पे नहीं बिकेगी क्योंकि ये ब्रांड न्यू हाउस है और ये ब्रांड न्यू हाउस होते वक्त इसने 197 का लगा हुआ है, तो उसका मतलब 197 पे से ऊपर जाएगा नहीं है। बट अगर हम मान लेते हैं कि किसी मिरेकल से 220 हो जाती है घर की प्राइस, so we're gonna make $10,000, $11,000. Not me, but investors gonna make $11,000. So this property at this rate, cash offer is not gonna make sense. उसने जब भी हाँ भी बोल दिया है होगा क्योंकि उसको पता है कि इसमें 30,000 का तो वैसे ही काम है और वो करना चाह नहीं रही, करने से पहले वो सेल कर रहा है मिस्टर सेलर और मिस सेलर। तो आपको वापस जाना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को देखा, वो बोल रहा है इसमें बहुत काम है, तो आप 50% आपको ऑलमोस्ट ऑफ लेना पड़ेगा, फिर जाके जब आप सारी एक्सपेंस डालोगे तो आप 60% तक आओगे, 65% तक आओगे, ठीक है। Hopefully that makes sense. Just leave the property, we have other one, maybe she's internet instead of financing. Okay, what is the other property? Amy and cash offer is 153. Sure. The last thing is a link, but she didn't accept this. Okay, we can talk. We can talk. आप इसका I guess link चाहिए था जो आपने भेज दिया। Why do I feel like we have called this properties for some reason? Taxes, man, their insurance and taxes are so high that eats all your money. Yeah, see, $228. That's just stupid. Anyways, it's a single family residence, 219. The cash offer we have sent is 153, but she didn't accept it. Yeah, the house looks good. The house, I don't think it has any immediate issues. Looks good. New. Okay, anything cash offer and seller financing completely works on this. Cash offer again, make sure कि 150 से ऊपर ना हो,
but we gave it 153. It's okay, it's okay, not that bad. 3 days in the market. अच्छा, हैदर इस पे कॉल करके इसको कन्विंस करना है कि सेलर फाइनेंस का कैश ऑफर उसने रिजेक्ट कर दिए, करेक्ट? ये आपकी प्रॉपर्टी है कि हुसैन की प्रॉपर्टी है? Okay, it's Hussein's. Okay. Okay, let's let me send screenshot. Okay, let me call her. Let me call her and see if we can do something here with Amy. Amy ने अपना phone number नहीं दिया था. My client says no to that offer. He requested you present an offer up to the or higher. It's fine with him if you find a third party financing. A cash offer isn't that important to him. Sale price is the main concern. Right, right. Yeah, so if the sale price is a main concern, okay, we can give you your money, right? We can give you your asking price. But may be possible she might have a mortgage. Maybe that's why he is not concerned about the cash price. Yeah, so it says 17% equity only in the property. 17% equity only in the property. Interest rate is 6.8. Monthly payment estimated is 1,200. Oh, veterans loan. Oh, so he's in army. Okay, so Mr. Seller, you used to be in army. उनका लोन थोड़ा सस्ता होता है. That's why he has 6%, not 7%. But let's talk to Amy anyways and see what's up. Usually, I probably wouldn't call this this property, right? Because Anna Hussein, for you, क्योंकि उसने सिर्फ इतना बोला कि कंफर्म नहीं है. इट मीन्स कि आपको अभी और काम करना है. उसको बोलना है आर यू ओके विद सेलर फाइनेंसिंग ऑफर बनानी है, ऑफर उसको देना है, और फिर वो रिजेक्ट करे या फिर कोई क्वेश्चन करे तो देन वी विल सी. राइट नाउ आपने अभी इसको सेलर फाइनेंस की ऑफर नहीं दी है, उसने कैश ऑफर एक्सेप्ट की, तो आपको कैश सेलर फाइनेंस देनी है. देन वी शुड टॉक. बट आई विल डू इट फॉर नाउ फॉर दिस टाइम. बट यूजली आपको वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पे एजेंट बोल रहा है मुझ पे कॉल पे बात करो तभी कुछ मैं सोल्यूशन दूंगा, नहीं तो आई एक्सेप्ट योर ऑफर, या मुझे समझाओ क्या बात बोलना चाह रहे हो, देन आई विल कॉल यू एजेंट्स. बट बिकॉज इस टाइम पे अगर मैं आपके एजेंट को कॉल करूँ, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अदर पीपल हु आर वेरी क्लोज टू देयर एजेंट्स. उनको अगर मैं कॉल करता हूँ, उनको बताता हूँ कि भाई उनकी डील ज़्यादा क्लोज है, क्लोजिंग के लिए आपकी डील अभी स्टार्टिंग में, राइट? सो इट्स नॉट गोना बी फेयर फॉर देम. So remember this for next time, but for now I'll call for now. Text now. 904 466. Welcome to Verizon Wireless. The number you dialed has been changed, disconnected, or is no longer in service. If you feel you have reached this recording in error, please check the number and try. The number I'm typing it right. Oh, it's 903. I remember. Guys, you gotta fix the number in your chat. It's 903, not 904. Amy से हमने बात करी थी. I think I'm pretty sure. Yeah, we had spoken to her for 3 minutes. What did we talk? No worries, Heather. I remember we talked to this agent. What did we talk about this? Why can't I remember this? You also talked to her in call. You gave it in a seller finance. Yeah, I wonder. उसने seller finance reject कर दी थी? I don't know. Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. Sayed Main Street buyer. Thanks. Please stay on the line.
I'm sorry, this person is not available. If you would like to leave an additional message, please reply after the tone. Hey Amy, this is Sayed. Me and Anna have been working on this property on the main street, trying to acquire for our portfolio. Um, I just wanted to run it and kind of call and kind of ask what's the update on the property. Um, I understand you requested a third party financing. We were hoping if we can get this property for a seller finance because the rent is not as much for us to get it approved for DSCR loan. So we were hoping if we can do a seller finance deal on it, that would be great. And we can close as soon as we can. All we need is a 7-day inspection and then we should be all set. All right. I'll shoot you a quick message as well, and Anna can also follow up with you. If there's an interest from the seller, please do let us know. We'll move on this property quickly. If there's no interest, please do let us know that as well, and we'll go from there. All right, take care. Bye bye. Okay, well, looks like Anna is busy right now. Oh, sorry, not Anna. Amy. Amy is busy. I'm gonna save this number because Amy we called before and I didn't remember what did we talk about. 8 Main Street. TEXR. Huh? You have an appointment? When? Okay. Yeah, I'll be there before then. Okay. And basically, go back to the Amy, and just mention Amy that we tried to call you. We weren't able to. Third part, third party financing is basically बैंक फाइनेंसिंग राइट कैश ऑफर आप दे रहे हो कि मैं सारे पैसे अभी कैश लेके जा रहा हूँ तो बोल रही कि कैश नहीं आके दो मेरी प्राइस के क्लोज आओ और कहीं से लोन ले लो राइट तो वो बोल रहा है लोन ले लो तो मैंने उसको DSCR को बोला कि DSCR माइट नॉट अप्रूव दिस थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग फिर बैंक होगा या फिर आप अपने किसी दोस्त यार के पास चले जाओ उससे बात कर लो इस तरह की बात है बेसिकली yes you okay I still have 4 unit property sure Harry let's get your 4 unit property and then I'll go to Heather if he's still here oh she's calling hello this is it Hi, this is Amy. I was returning your phone call. Hi Amy yes I was we were kind of talking about your property on Main Street I think it's 3418 Okay. yeah, I'm not sure what was the interest from the Mrs. Seller. We kind of gave the over asking for a seller finance offer. I'm not sure what you're talking about. I emailed Anna back and told her that the seller rejected that 153 cash offer. He That's doesn't correct. care if the offer is cash or third-party financing. Right. Cash doesn't mean a lot to him. That house would pass any inspection at any time. It is in tip-top condition. Very well. He doesn't want to accept any offer below 205. Okay. So, because from my understanding, sorry, go ahead. I didn't mean to cut you. if you can offer that, let us know. Okay, yeah. If you can't, then it's probably a waste of your time to keep. I feel bad that you guys just keep asking me, and I don't mind. No, of course. You. It's just they're not going to accept anything like that. A 153 is ridiculous. They're not in any financial hardship. It's not something that he has to sell tomorrow. Mm-hmm. And so we know what the house is worth. I've done a full market analysis and all the comparables in the area. And 219 itself is a bargain. So when I called him, because I have to present every offer you present me, Right. when I called him, he decided that he just wanted to let you guys know if you want to offer 205, that'd be great. But anything below that, like in the 150s, 60s, 70s, even if you offered 190, he wouldn't take it. Okay. The other option, I guess we were discussing, we were kind of running the rent numbers. We were thinking if he's able to do like a seller finance deal, we can come at 240, kind of give him 10% more at his asking in terms of, interest
over a. He does not want to carry the note. Oh, he He doesn't does want to carry the not note want to either. do self-financing. Huh? So he doesn't want to carry the note even if you're coming about 10% over. Even if you're, what, going to pay what, 240? Yeah, 240, 241, something If you around would that. finance it maybe over 12 months, but no, he doesn't want to be the Hmm. bank. He Okay. wants to sell the house today. Okay. He doesn't want to carry the note, and he's not prepared to be anybody's, Bank. he's not going to do that. Okay. If you want to offer a cash offer or you want to get some financing and offer 205, I could maybe talk him into 200, but anything below that, he's just not going to entertain, okay? Okay. Okay. The only thing I went to DSCR, they are saying no at the asking price, so it has to be have a wiggle room for us to have I enough don't know cash what flow. SDR is. I don't know what that is. DSCR loan, like they approved the loan for property income. It's a I don't know what that is. I don't use Okay. that loan company. No, it's actually a Everybody- government-backed loan. No, yeah, I don't know. Then they're not doing their numbers correctly because that will finance at that. In fact, it's below market. So we've priced it to sell. So I Okay. don't know who the SDR is or any of that you're talking about, but use a different loan company. They'll loan you the money. Call Uh, a mortgage broker. yeah, I mean, I have hundreds of loans right now, so I'm kind of tapped out on that. But sure, maybe I can figure something out and see where we at on that loan. DSCR is just a debt to income ratio loan. They just finance the property, doesn't care about the investor. As long as property makes money in terms of cash flow, they sign the loan left and right. And we use it for 90% of our properties, unless something wrong, if we cannot do a DSCR or there's a flip or something, then it's different. But sure, I I will. understand. Yeah. I'm not a realtor. I'm a broker. I mean, I'm Right. a full-blown real estate broker, which is one step above a realtor. That's correct. I've been one for almost 10 years. I don't know what company you're talking about. I've never heard that. Call a mortgage broker. I can give you a great mortgage broker that would finance you today. Okay. So if you want his name, I can give it to you, but all that, I know what kind of companies you are that offer these things, and he's just not interested. If you want to make a legitimate offer and at a legitimate price where we don't carry the note, he would love to entertain. He'd love to sell the home, just not at 153. That's almost offensive. And then I've already told you this will be my either second or third time I've emailed it. I talked directly to you last time and told you. And then I've emailed it to Anna. So this is my third time to tell you guys, Right. we are not going to finance it. Okay. There will be no owner financing whatsoever. He does not want to be the bank. Sure, I completely agree, and sorry for making you repeat 3 times. How about if we kind of follow up, let's say in a month, and if the property is still on the market, do you think that would change a little bit of terms at No. that time? No, I think you'll be wasting your time. Okay, sounds good. We'll then. Do you have any other properties in the area? Because we have a decent portfolio going on in the area, so we're really hoping to pick up few before the end of the next month. But not if you're going to lowball them like that. I have a $125,000 home in Talco, Texas. It's a 2-1, but the same thing. They're not going to owner finance it, Okay. and they don't want you to offer them $75,000 for it. Okay. Sure. I mean, So if you're going to if you come can. with the same approach, then no, I don't have anything. No, the If you're going thing. to come with a different approach, then yes, I do. Yeah, because the thing is the rent. I'm checking the on Zillow rent. I'm guessing about 1,100-ish, 1,200-ish rent on this. The cash. Zillow is a different kind of algorithm, and it does not drive the market. I mean, it's a great tool to help you, but it doesn't. Right. They don't subscribe to every MLS. They don't do all the things even that Realtor.com does. Correct. And I'm considered best of Zillow. I'm on Zillow every day. But Right. there's still properties out there that they don't. And I'm looking at it on Zillow, and I don't see that they say it's worth $153,000. No, not that's Zillow. not true. I just meant the rent. Because. It doesn't say. I'm looking at it right now, and it doesn't say the rent is $1,500 either. What do you see? Sorry, maybe I'm mistaken. Let me check. I again. don't see that. I see where it's estimated at $215. So I don't
see where you're talking about, and the ball's in your court. I'm very, very busy. If you want to call me back with a 205 offer, I Okay. am willing to listen all day long. If you don't have that, I'm not going to sit here and debate the Right. effects of Zillow. Find Right. a new lender, okay? Right. Sure. Find a Let's new do that. lender. Let's do that. All right. Thank you for your time. I appreciate it. Bye bye. Okay. Looks like there's not much we can do. They're probably gonna sit on the market for a while. Um, not much we can do. Let them sit. She's a broker apparently, and she don't know what is DSCR. Oh my goodness, how she's a broker and she don't know what is DSCR. Literally every investor is using DSCR loan. Every investor. They don't go to the conventional bank. They go to the DSCR lenders. Anyways, basically, Anna, all you can do, follow up in a month. There's nothing you can do. She's very head-hearted. She don't have a knowledge of DSCR, and she's telling me find a different lender. Unfortunate. Okay. Hopefully that makes sense. Let's see. Harry, where's your 4 unit property? Let me figure this out. We will have to run numbers on it. Numbers, if you have everything, you have purchase price, down payment, rent, everything there, then I can do it, or else we can do it tomorrow. I'll take Heather's last email. This agent is asking for a call. Most probably they will accept the offer. Name is Sarah. The Google Docs. What is it? This is the house. Harry, is this the house you're talking about? Where is the link for the house? You said this. Oh, this one. Okay. Let's see. Can you do 25% down? What is the rate? What else do you own? Miami. Okay, so it's an apartment building, $6 million. What's the cap rate? 5. Okay. What's a seller finance deal आपने इसको दिए? What deal did you give him, seller finance? How we know the house is rented or not? You don't. You have to ask the owner. You have to ask the owner if the house is rented. अगर एक दो पिक्चर है, ज़्यादा पिक्चर नहीं है घर की, तो दैट्स इंडिकेशन कि हाउस रेंटेड है. तो रेंटर की प्राइवेसी को ख़राब करने की बजाय उसने पिक्चर ही नहीं डाली ऑनलाइन. एक ये भी रीज़न हो सकता है. Heather, what's the update on this? Heather, I have no idea what you have ordered, and I'm not getting any response. So I'll move to the next person. Heather, I told you I need the numbers in writing. I wouldn't want to open the PDF, right? I'm doing it for now, but please make sure I need the numbers in the chat, please. Purchase down payment, monthly. He wants 25% down. So what are we chatting with him? Are we chatting that he wants 25% and what? I'm unsure.
Guys, I'm telling you, I need yeah, 8 apartment street. Heather, I got the email as well. Oh, sorry, Harry, I got this email as well. You need to run the numbers on this. You have to run the numbers. You have to find the net operating income, NOI. When you get the NOI, you will put it here, okay, in this box, net operating income. और यहाँ पे सब कुछ ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। जब आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम पता है, इसका मतलब सिर्फ इनकम जो सारे खर्चे निकालने के बाद की है, तो आपने यहाँ पे रखना है जिस तरह आप नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, हैरी, एवरीथिंग एग्जैक्टली सेम, एंड मेक एन ऑफर एंड सेंड द ऑफर, ठीक है। उस पर जो रिस्पॉन्ड आता है वी विल देन सी इट, ठीक है। दैट्स अ 4 यूनिट प्रॉपर्टी। आई अंडरस्टैंड इट्स अ फ्लिप एंड रिचर्ड गाय, जिसने कॉल पे बोला था यस सर करके बात कर रहे थे, बट यू हैव टू रन द नंबर्स। आप उस पर नंबर रन करें जो उसने आपको नंबर दिया हुआ है। परचेस प्राइस वहाँ पे जाएगी 10% ओवर आस्किंग, अंडर आस्किंग, एंड द सेलर फाइनेंस, ठीक है। वो फिर आप उसको ऑफर सेंड कर दें, बोले कि मैंने अपने मैनेजर के साथ बात करी थी, दिस इज़ आवर ऑफर। वो बोलते कि नहीं ऐसा करें वैसा करें, देन वी विल कॉल, ओके। हैरी ऑल्सो, आप अगर वो बोलता है कि सॉरी हैदर, अगर वो बोलता है कि आप मुझे 25% ला के दें, तो आप उससे पूछो आई कैन डू दैट, इज़ द सेलर ओके विद द सेकंड पोजीशन सेलर फाइनेंसिंग, ठीक है। उससे इतना पूछ लो, इज सेलर इज ओके विद सेकंड पोजीशन सेलर फाइनेंसिंग। वो यस बोलता है तो देन वी आर गुड टू गो। फिर हम उसको 25 क्या हम 30% भी ला के दे सकते हैं और उसको खुश कर सकते हैं, बट उसको सेकंड पोजीशन बोलना। कैप रेट इज लिटिल बिट लो, आई वांट इट टू बी एट 7, ठीक है। अगर 7% कैप रेट होता देन इट माइट बी गुड। तो हम करेंगे ये कि इससे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, ठीक है। हमेशा सेलर फाइनेंस पे आप उतने ही पैसे देंगे जितने पैसे यहाँ पर है, ओके। होपफुली दैट मेक सेंस। आपने बेसिकली उसके पास वापस जाना है, उसको बोलना है we can do 25% if seller is okay with second position seller financing, okay। वो बोलता है जो भी बोलता है, उसके बाद फिर आप अगर वो हाँ बोलते हैं then it's good, if it's he wants first position पर हम सिर्फ 10% दे सकते हैं, that's it। he's on the market for 300 days, nobody is buying it, you can see, ठीक है। give agent contact to seller to call her। Sir, an agent responds and says she don't have any number to contact on call. What should I say now? Yeah, you can tell him that I will have my manager call you, and I will pair you up with the student, and then we can go together. Okay, sounds good. I think that's pretty much it. Harry, please run the number. I'll be waiting on this property. Can we run the property tomorrow? I can, but I want you to also work on this, right? So if you don't know what net operating income is, find me the rental income, okay? Find me, I need to know the rental income, read the whole document, do Control F and put NOI, okay? Or put rental revenue and figure out, अगर उस पर नहीं लिखा हुआ then email the agent and ask agent, hey agent, I want to know what the current net operating income is। और आप जिस भी लिस्ट, अगर वो लिस्टिंग अगर जिलो वगैरह पे है यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ आता है कहीं कहीं नेट ऑपरेटिंग इनकम, राइट हियर यहाँ पे लिखा हुआ है नेट NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो हो सकता है अगर वो ऑनलाइन है तो आप देखो, नेट ऑपरेटिंग नहीं इनकम मिल रही तो आपको रेंटल इनकम लाजमी है, देन वी कैन नॉट टॉक नंबर्स, ठीक है। रेंटल इनकम, परचेस प्राइस आपको लाजमी होनी चाहिए, फिर हम नंबर बात कर सकते हैं, ओके। Heather, I told you ask him for second position seller financing, and if he agreed, good, we'll call them and we'll give them, tell him we'll give you 30% down payment, okay। um sorry, your details said that's good, but it's not here, I mean, okay, sounds good guys. I will end the live here. I think we answered all the discussions. The agent who was a little bit rude, we gotta make sure we call her tomorrow, okay। What's her name? 315 lady, okay, we'll call her today, okay। Anyways, I'll let you guys go. Inshallah we'll see you guys tomorrow. And again, for Hamad, we are just waiting on the inspection. Your deal is under contract. I'll talk to you later. Bye bye.
Okay, TikTok, I hope everyone is doing good. Any questions, concerns here? YouTube, I will try to answer one question real quick. If you have any, please let me know. TikTok, there's only one person here, but TikTok, if you have any questions, please let me know, or you can just comment in any of my video. I'll personally see the videos and answer the comment. Okay, I'll see you guys tomorrow. Bye bye for TikTok. This one is one. Okay, so the people who are on YouTube, I know, I think it's Amara and Hussein. Thank you for joining, guys. Again, Hussein, your one deal is we have to do higher cash offer. And for Amara, if you have any questions for tomorrow, we can figure out some way to call your agent and go from there. Okay. So I'll see you guys tomorrow, inshallah. Until then, take care of yourself and of this channel. Like this video, and I'll see you tomorrow. Bye bye. Yes.